Good evening, everyone. I hope I'm audible. Yes, sir. Good. So, I'm hoping that basic requirement that we were supposed to try with has been completed, and all of you are in a position where you could understand the limitation of the group function. So, today we will start from there. We'll start from there, and obviously we will talk about like group by and our like basic concepts and more advanced stuff where we can use that. To be frank, there is no quiz today. Reason being, nothing learned in last session. What new quiz to be taken, right? So आज हम लोग कुछ अच्छा पढ़ते हैं so that we will be having something a good quiz to be planned on like a next session. So let us start with Digvijay sir. Do not lock the meeting. Let the people get in, and we will Yes, sir. start the today's session itself. Definitely, I'll just go ahead. Something that I learned like last session, we discussed something in last session. Take a look at this. And I was trying to tell you that what a group by query does. The group by query basically help you to group. It is basically help you to group the element by certain column. And once you group the element with some columns, you can perform aggregate operation. And as I told you, at least 5 main aggregate operation that we must be knowing, which includes count, sum, average, max, and min. Like a minimum thing that we should be aware of, right? And yesterday I was saying that when you are firing a kind of a group query, when you are executing a kind of a group query, when you have done like a group by with like a single element, single column, then whatever you get, you will be able to put it into some sort of a chart, like bar chart or whatever, some sort of a chart, and that will give you the idea how exactly the data is like organized. So all your data visualization tools, there are plenty are there, Tableau, ClickView, or even for that sake, even your Microsoft Excel. So many of them, they are following the logic, something similar to the group by. But every time you fire a group by query, what exactly happened? I guess I told you some steps yesterday saying that the client will give like a SQL query. That SQL query will be sent to the server. From the server, all the data will be loaded into the memory. Once the data is loaded in memory, it will be sorted there. It will be grouped by that particular column, given column, and then the aggregation operation will be performed, and then the result produced and it will be sent. If you really take a look at, this is something that I was explaining yesterday. Load the data from the server into the RAM, right? Like a first, then sort the data on group by columns, then group similar elements by grouped columns, perform given aggregation operation, and then whatever result is calculated, send that result back to the client. That was basically the idea. So, and we said that why we are doing group, because now we want to do the aggregate operation, not on the whole table, not on the whole table, but we want to perform the aggregate operation on the individual group, which was not possible earlier, which was not possible earlier. So this is something we are trying to discuss. Now, something more I want to add is that there is some of the syntactical notion regarding group by we should be aware of. The very first syntactical notion is that if column is used for group by, then it may or may not be used in a select clause. What I'm saying is that अगर आपका कॉलम ग्रुप बाय में आप लोग यूज कर रहे हो, तो आप उसको सिलेक्ट में, सी ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट सिलेक्ट हमेशा आपको वो बताता है, सिलेक्ट आपको हमेशा ये बताता है व्हाट टू शो. आई रिपीट, सिलेक्ट हमेशा हमको ये बताता है व्हाट टू शो, राइट? सो व्हाट टू शो, व्हाट टू प्रेजेंट. सो आपको क्या प्रेजेंट करना है, आपको क्या शो करना है, दैट इज टेकन केयर. सो इफ अ कॉलम is used for group by, you can take a decision whether you want to show it or you do not want to show it. However, the other way around, if you really want a column to show, if you want some column to show, it has to be there into the group by. That is really mandatory.
So I didn't understand that. Okay, no problem. I will go ahead and I will give you some of the example for this. Some of the example for this, I'm hoping that you are already into the, let's say, DQL, select, code sharing utility is already on. Take care of that. I'm talking about, it's a group by over there, and under the group by, what I want to talk about is same thing. uh, I'll just ensure that where I am, I'll usually जो लॉगिन हम लोग हमेशा करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर, you can say MySQL -u EDAC -p EDAC and DACDB, KDACDB, whatever it is. So you just give that command and you ensure that you are logged in. हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, बट बाय द वे कहाँ पर गया हम? ओके, पहले कमांड प्रॉम्प्ट ही ओपन करना पड़ेगा ना, आई फॉरगॉट. नो प्रॉब्लम, कमांड प्रॉम्प्ट इज ओपन नाउ. Once command prompt is open, I just pasted this. Okay, all right. I'm just taking care that the tables, mainly employee table and this table is visible to me. Books table is visible to me. Department table is visible to me. EMP table is visible to me. Very good. Some query that I have given yesterday was select DBT comma, count of employee number, count of, again, you can even say count of star. Star means like anything, but let us be specific. I'm saying that the count of employee numbers from EMP, and then you go ahead, you write it group by DBT. So yesterday I told you that we can write a query something like this, and this query will be executed. No doubt on that. इसका रिजल्ट क्या आता है? कल हमने इसका रिजल्ट चेक किया था. You recall that result? The result of this query was department number, right? Per department number, I'm getting the count of employees. Per department number, I'm getting count of employees. So the actual result that I fetched was something like this. So I guess now the result is very much visible. So per department, obviously you do not give a guarantee of a order over here. Order और ग्रुप बाय, कल कोई तुमको सवाल पूछ रहा था, हम लोग ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय मिक्स कर सकते हैं क्या, वगैरह वगैरह. आज हम लोग आराम से ग्रुप बाय पढ़ने वाले. So it will take much more time. So we will see all possible permutation combination as well. But this is giving me the result that which department how many employees are there, which department how many employees are there. अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो सिंटैक्टिकल पॉइंट्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इफ अ कॉलम इज यूज्ड इन अ ग्रुप बाय, देन इट मे और मे नॉट बी यूज्ड इन अ सिलेक्ट क्लॉज. मतलब अगर आपने ग्रुप बाय में कोई कॉलम दिया है, प्लीज पे अटेंशन, अगर आपने ग्रुप बाय में कोई कॉलम दिया है, देन ग्रुप बाय में दिया हुआ कॉलम सिलेक्ट में हो या ना हो, वो आपका चॉइस है, वो आपका चॉइस है. सो मतलब क्या, आई एम जस्ट गोइंग अहेड एंड आई एम राइटिंग देयर, इफ आई राइट इट ओनली दिस मच, आई सेड दैट मैंने ग्रुप बाय में डिपार्टमेंट नंबर दिया है, लेकिन वो डिपार्टमेंट नंबर मुझको डिस्प्ले नहीं करना है. मैंने ग्रुप बाय में डिपार्टमेंट नंबर दिया है, लेकिन वो डिपार्टमेंट नंबर मुझको डिस्प्ले नहीं करना है. इज इट पॉसिबल? आई सेड दैट yes, it is very much possible. As far as syntax is concerned, it is very much possible. So this is allowed. However, the problem is, listen carefully. However, the problem is, even though you allow this, even though it is working, you doesn't find a meaning of it. अभी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, सर काउंट हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है ये 5 काउंट किसका है, 6 काउंट किसका है, 3 काउंट किसका है. सो आप लोग उसके बिना डिस्प्ले कर सकते हो, बट फाइंडिंग अ मीनिंग ऑफ दैट रिजल्ट becomes really difficult or probably becomes impossible. So usually you do not want this, but as far as syntax is concerned, yes, you can do that. So the point I want to write it over here. If um, a grouped column may not be in select statement, it may not be in select statement. However however usually result is meaningless or rather very difficult to understand. Meaningless, or you can say that difficult to understand. आप लोग ऊपर का रिजल्ट चेक कर सकते हो और नीचे का रिजल्ट भी आप लोग चेक कर सकते हो. इफ एट ऑल, आई जस्ट शो यू दिस पर्टिकुलर रिजल्ट वंस अगेन. आई विल कॉपी इट फॉर यू सो दैट आपके पास ये डॉक्यूमेंटेड रहेगा. एंड एज यू सी दिस रिजल्ट, सो आप लोग यहाँ पर रिजल्ट देख तो रहे हो,
बट द क्वेश्चन इज दैट इस रिजल्ट का मीनिंग क्या लगाओगे, व्हाट एग्जैक्टली दिस रिजल्ट मीन, एंड आई बिलीव दैट इट इज रियली मीनिंगलेस कि आपको सिर्फ काउंट दिखाई दे रहे हैं, बट ये काउंट किसके रिलेटेड है, कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा काउंट है, ये समझना काफी मुश्किल है. सो इट रियली डजंट मेक एनी सेंस, इवन दो syntactically it is allowed, syntactically it is allowed. And the other way around, somewhere you are saying that सर हमको हमको इसको सिलेक्ट करना है, हमको डिपार्टमेंट नंबर दिखाना तो है लेकिन हमको ग्रुप नहीं करना है, ये डिपार्टमेंट नंबर दिखाना तो है लेकिन हमको ग्रुप नहीं करना है. आई एम सेइंग दैट दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड. एंड आई एम होपिंग दैट जो मैंने आपको सेटिंग करने के लिए बोले थे, अगर वो सेटिंग आपने किए होंगे तो आपको भी ये एरर आने वाला है. जिन्होंने सेटिंग किए होंगे वो, अगर आपने सेटिंग नहीं किए होंगे एंड इफ यू आर स्टिल गेटिंग सम result out of this, then do not even ask now, because I really do not want to waste one more lecture onto this. Correct? So I'm very sure if the settings are done correctly, then this query is giving you the result, giving you the error. So I'm saying that this is error. What is error? Error kya hai? Department number is selected, then it must be, it must be grouped, it must be grouped by. ये आपके ग्रुप बाय के अंदर ये आना मैंडेटरी है, और अगर ये नहीं आ रहा है, अगर ग्रुप बाय में आपने नहीं दिया है, तो आप उसको एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज नहीं कर सकते हो, आप उसको एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज नहीं कर सकते हो, दैट इज फॉर श्योर. यस, इट इज काइंड ऑफ लिमिटेशन विद द ग्रुप बाय इज प्रोमिनेंट ओवर हियर. सो मैंने आपको ग्रुप बाय का कल लिमिटेशन बताया था, एंड आई टोल्ड यू दैट यू कैन नॉट यूज एग्रीगेट फंक्शन विद अ नॉर्मल कॉलम, with a normal column. So I really want you people to try this out and check whether you are getting the appropriate results or not. Please go ahead. ये जो expected results है वो आपके ठीक ठाक आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कुछ गड़बड़ हो रहा है, प्लीज चेक कर लो. और अगर गड़बड़ हो भी रहा है लास्ट वाले क्वेरी में, तो आज बताना मत, बताना भी मत, राइट? सो दैट बताना है तो हम लोग लेक्चर के बाद में अलग से मिलते हैं, अलग से फोन करना, फिर हम लोग ढूंढते हैं. लेक्चर हॉल में मत बताना अभी. So that really good well gone well, and this is something I'm trying to tell you. So आपके पास डिपार्टमेंट, this is usually the what we give, ये हम लोग दे सकते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है, और ये हम लोग दे ही नहीं सकते एज पर द SQL स्टैंडर्ड, एज पर द ANSI स्टैंडर्ड. दिस इज मीनिंगलेस, दिस इज मीनिंगलेस. अब ये तो आपके बेसिक वाले क्वेरीज हो गए. अब मैं सोच रहा हूं अब हम लोग स्लोली स्लोली थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर जा सकते हैं, एंड वी आर रेडी फॉर दैट. सो एडवांस लेवल के ऊपर ये मैं आपको बता रहा था, ये ग्रुप बाय के बेसिक्स क्या है. अब मैं थोड़ा सा ग्रुप बाय के एडवांस लेवल के ऊपर जा रहा हूं, वेयर आई एम सेइंग दैट ग्रुप बाय ऑन मल्टीपल कॉलम्स, a group by on multiple columns. Is it possible? My answer is yes, it is possible. और वापस से एक बार, हमने इससे पहले कुछ पढ़ा था, आई एम रियली होपिंग दैट कि आपको वो याद आ रहा है. लेट मी ट्राई दिस आउट, लेट मी ट्राई दिस आउट, एंड आई एम ट्राइंग टू रिमाइंड यू समथिंग, और चेक करो क्या आपको ये याद आ रहा है. हम लोगों ने ऐसा कोई तो कीवर्ड चेक किया था, डिस्टिंक्ट DPTNO कॉमा जॉब फ्रॉम EMP. कोई मुझे बताएगा हाउ मेनी रिजल्ट्स दैट इट वाज गिविंग. हाँ, यस, इट इज यूनिक. हाउ मेनी रिजल्ट्स दैट इट इज गिविंग, कितने रिजल्ट वो आपको देता है. मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ अभी, एक मिनट, मैं अभी आपको पूछ ही नहीं रहा हूँ कि ये क्या देता है, ये आपको आता है. डिस्टिंग मतलब यूनिक देता है, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट नंबर एंड जॉब आपको मिलता है. बट टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट कितने मिलते हैं? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, इज 9 रिजल्ट, नॉट 3 रिजल्ट. आप लोग चेक कर सकते हो पर डिपार्टमेंट, ए पर डिपार्टमेंट आपके पास कितने कितने रिजल्ट्स है वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं. एंड जस्ट टू शो यू प्रॉपरली, लिसन केयरफुली, just to show you properly, I'm talking about this, I'm talking about this. So सर यहाँ पर कैसे रिजल्ट है? डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर वी हैव गॉट टोटल 3 जॉब्स, डोंट वरी, अब मैं बता ही रहा हूँ यहाँ पर. सो पहला जॉब है मैनेजर, चेक कर लो. डिपार्टमेंट 10 के अंदर वी हैव गॉट अनदर जॉब, लेट्स से क्लर्क जॉब, क्लर्क जॉब. एंड डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर वी हैव गॉट, लेट्स से वन मोर जॉब, वी हैव गॉट क्लर्क, we have got manager, and we have got
President. Yes, absolutely correct. So there are three jobs are there. By the department number 20 के अंदर, department 20 के अंदर, again we have got clerk, again we have got manager, and department number 20 we also have got analyst. Absolutely correct. We have got analyst and analyst. Okay. And finally, we also have got department 30, and department number 30 also has got clerk, also has got manager, and has got one more is like a salesperson or salesman. All right. Now listen carefully. Listen carefully. I want you people to do bit more counting. I want you people to do bit more counting, and I want you people to tell me how many clerk, listen carefully, how many clerk are there in a department number 10. Department 10 में total number of clerk कितने? Department number 10 में total number of managers कितने हैं? Total number of president कितने हैं? Total number of clerk कितने हैं? So I want that individual counting, and please do it manually. No shortcuts, please. No shortcuts, please. Please do it manually so that we can try to find out one by one. So let us starting with department 10 has got one clerk. Very good. Department number 10, how many clerk are there? My question is not total how many clerk are there into the company. ये मेरा question बिल्कुल नहीं है. I got like a question, how many clerk in department 10, how many manager in department number 10, how many president in department number 10, department 20. Department number 20 has got how many clerk? डिपार्टमेंट 20 के अंदर कितने क्लर्क है? एक ही है. वेरी गुड. डिपार्टमेंट नंबर 20 में मैनेजर कितने हैं? आर यू श्योर? समथिंग इज रॉन्ग. आई गेस यहां पर दो क्लर्क है. डिपार्टमेंट 20 में क्लर्क कितने हैं? हाँ, देर आर टू क्लर्क, वन मैनेजर एंड टू एनालिस्ट. प्लीज नोट, डिपार्टमेंट 20 आप लोग चेक कर लो यार. देर आर टोटल टू क्लर्क. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम का क्वेरी लगाओ और चेक करो, एक एक काउंटिंग कर लो. सो विल फाइंड दैट टू क्लर्क, वन मैनेजर एंड वन एनालिस्ट. डिपार्टमेंट 30 के अंदर वी हैव गॉट लेट्स से वन क्लर्क. डिपार्टमेंट 30 के अंदर वी हैव गॉट लाइक वन मैनेजर एंड टोटल सेल्समैन. हाउ मेनी सेल्समैन आर देयर? देयर आर टोटल फोर सेल्समैन आर देयर. नाउ आई एम सेइंग दैट ये मैंने किया. ये सवाल पैदा नहीं होता कि आपने नहीं किया क्या, ये आप लोगों ने कैलकुलेट किया, बट यू आर डन इट लाइक मैन्युअली. मैं क्या कह रहा हूं, क्या मैं ये क्वेरी डाल के निकाल सकता हूं? कैन आई डू इट विद सम क्वेरी? एंड आंसर इज यस, आई कैन डू इट यूजिंग वन क्वेरी. सो व्हाट शुड बी माय क्वेरी? हैव अ लुक एट दिस. सिलेक्ट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. आई एम लुकिंग फॉर डिपार्टमेंट नंबर. प्लीज पे अटेंशन. आई एम लुकिंग फॉर जॉब. ये भी मेरे को चाहिए, नो डाउट ऑन दैट. बट एट द सेम टाइम I want a counting of employee. And I'm simply saying that from EMP. So I'm saying that select department, select job, and then select counting of employee. So I'm saying that ये आप लोग कर लो, and then I want to do it group by department number as well as job. Again common sense. अगर आपको ये दोनों चीजें सिलेक्ट में चाहिए तो ग्रुप में ये होनी ही चाहिए. तो अभी मैं क्या कह रहा हूं कि ये पूरा डेटा लोड करो. डू नॉट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, डू नॉट ग्रुप बाय जॉब, डू इट बाय द कॉम्बिनेशन. ग्रुप इट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट नंबर एंड जॉब. सो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप डिपार्टमेंट नंबर एंड जॉब ये आपके सामने है. दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड जॉब, कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड जॉब, कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड जॉब. एंड देन पर कॉम्बिनेशन के लिए what count is there, so that count I want to get it, the count I want to get it. So you just get this and you just paste it and you should be getting the result. सर ये रिजल्ट सॉर्टेड नहीं है. हाँ मेरे को पता है रिजल्ट सॉर्टेड नहीं है, वो हम लोग ऑर्डर बाय लगा के इसको ठीक कर लेंगे. फिलहाल के लिए यू जस्ट क्रॉस चेक इज द रिजल्ट इज करेक्ट, एंड ऑल्सो चेक वेदर यू हैव अंडरस्टूड द क्वेरी ऑफ डिपार्टमेंट नंबर ऑन मल्टीपल वंस. डायरेक्टली ये क्वेरी समझने की कोशिश मत करना, पहले ये क्वेरी समझो. आई रिपीट, पहले ये क्वेरी समझो. ये क्वेरी समझ में आने के बाद में सी टू इट दैट थोड़ा सा उसका काउंटिंग करो, एक्चुअल काउंटिंग मैन्युअली कर लो. जब आप लोग मैन्युअली काउंटिंग करोगे तो आपको पता चलेगा दिस ग्रुप बाय विल फाइंड आउट दिस यूनिक कॉम्बिनेशंस, एंड दैट यूनिक कॉम्बिनेशन से वो ग्रुप करता है. और यूनिक कॉम्बिनेशन से ग्रुप करने के बाद में पर ग्रुप पर कॉम्बिनेशन कितने एम्प्लॉइज है ये वो सर्च करता है.
पर कॉम्बिनेशन कितने एम्प्लॉयज है ये वो सर्च करता है. प्लीज ट्राई इट एट योर एंड एज वेल एंड इंश्योर दैट यू आर गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट. इसके साथ ऑर्डर बाय कैसे यूज करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले एक एक पढ़ते हैं. पहले ग्रुप बाय सिर्फ पढ़ते हैं, फिर आगे स्लोली स्लोली जाएंगे. See, following the steps are very important, because if you are not really followed the steps, then there is a big problem. Otherwise, what happens is that you directly give a query and you say that, sir, मेरे को ये query समझ में नहीं आ रहा है. Then there will be a problem. There will be a problem. So please participate it. Go step by step. You'll find that things are very easy. तो सर, अगर मैं ये क्वेरी देता हूँ, तो इससे जो मेरे को रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? लिसन केयरफुली. उससे जो भी मेरे को रिजल्ट मिलता है, ये उस रिजल्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर डिपार्टमेंट से हम लोग ग्रुप कर रहे हैं, और बाद में हम लोग इससे भी ग्रुप कर रहे हैं, जॉब से भी ग्रुप कर रहे हैं. व्हाट एग्जैक्टली इट सिग्निफाइज? सो लेट मी ड्रॉ सम डायग्राम एंड लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली इट सिग्निफाइज. आई एम जस्ट गोइंग अहेड एंड टेलिंग यू व्हाट इट सिग्निफाइज. अभी जो हम लोगों ने क्वेरी फायर किया है, एज आई से दैट, जब जब हम लोग ग्रुप करते हैं, जब जब हम लोग ग्रुप करते हैं, ग्रुप के क्वेरी से जो रिजल्ट आता है, उससे हम लोग एक प्रॉपर चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं. मैं फिर से एक बार क्वेरी फिर से एक बार लिखता हूं, तब तक आप लोग इसको करते रहो. सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, कॉमा जॉब, कॉमा काउंट ऑफ एम्प्लॉय नंबर, करेक्ट, फ्रॉम ईएमपी, from EMP, and you are simply saying that group by both department number and job. So अगर मैंने ग्रुप बाय में कोई भी एक छोड़ दिया तो आपको एरर आने वाला है, बिकॉज ऑफ द सिंटैक्टिकल रिक्वायरमेंट. व्हाट इज द सिंटैक्टिकल रिक्वायरमेंट? सिंटैक्टिकल रिक्वायरमेंट इज वेरी सिंपल. जो कुछ भी आपको सिलेक्ट में करना है, वो आपके ग्रुप में होना ही चाहिए, वो आपके ग्रुप में होना ही चाहिए. बट आई वांट यू पीपल नॉट टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ओनली. I want you people to understand the concept behind it. And concept is something like this. Have a look at this. अब मैं इसका जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, now that graph is very interesting kind of graph. Please understand that यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ग्रुप करेंगे बाय डिपार्टमेंट. फिर हम लोग, रुको जरा, सबसे पहले हम लोग ग्रुप करेंगे बाय डिपार्टमेंट. सेकेंड लेवल पे वी विल डू द grouping by the department 20, and then it's like a grouping by the department 30. So you have group 3 group हो गए. At the parallel line, here I am saying that it's like a 1 employee, here I am saying like a 2 employee, and it is like a 3 employee, like a 4 employee, or let's say 5 employees. Okay, let it be. Now department 10 के अंदर there are total 3 jobs. Which 3 jobs are there? So let me write. There are 3 jobs. The first job is clerk, manager, and then president. The second one, analyst, clerk, and manager. Again, clerk, manager, and salesman. And what you're saying is that department number 10, a department 10 has got has got one clerk. Department number 20 has got one manager, and department 10 has got one president. Department 20 has got two salesmen. Department 20 has got two clerk, and department 20 has got one manager. Department 30 has got one clerk, has got one manager, and also have, let's say, 30, how many are there? So yes, 4 salesmen. And this is something showing me the proper result. So ये हम लोग जो बना रहे हैं, this is kind of, ये 2D ग्राफ नहीं है, this is kind of a 3D ग्राफ है. ये बेसिकली 2D ग्राफ नहीं है, ये बेसिकली 3D ग्राफ है. यहाँ पर 3 अलग अलग डायमेंशंस हैं. योर फर्स्ट डायमेंशन ओवर हियर इज नथिंग बट डिपार्टमेंट नंबर. Your second dimension over here is kind of a job, and your third dimension over here is kind of a count. तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब लोग ग्रुपिंग एक कॉलम के ऊपर करते हो, तो आपको एक 2D ग्राफ मिलता है, 2D चार्ट मिलता है. लेकिन जब आप लोग इसको दो के ऊपर करते हो, तो आपको यहाँ पर 3D चार्ट मिलता है. और अगर आप लोग 3 कॉलम के ऊपर करोगे, तो शायद आपको 4D चार्ट मिलेगा, and so on so forth. So I'm saying that it will become more and more complicated. Just to put a point, I had written over here, when group by
2 column generated output can be used to plot 3D chart and so on and so forth. So जब आप लोग एक कॉलम के ऊपर ग्रुप करते हो तो आप लोग 2D चार्ट बना सकते हो, जब आप लोग दो कॉलम के ऊपर ये करते हो तो आप लोग 3D चार्ट बना सकते हो, और अगर आप लोग तीन कॉलम के ऊपर करते हो आप लोग 4D चार्ट बना सकते हो. सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल. That is the reason group by queries are also called as multi-dimensional queries, or they are also called as a spatial queries. तो अब ये इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में कोई आपको थ्योरी नहीं पूछता है. इंटरव्यू में लोग सीधा सीधा बोलते हैं कि राइट अ क्वेरी. एज फार एज जब सीडैक के इंटरव्यूज होते हैं तो सीडैक के इंटरव्यू में जब भी बच्चों को कुछ पूछा जाता है डेटाबेस के इसमें से, दे जस्ट गिव अ सिनेरियो, ये ऐसे ऐसे है, यू राइट अ क्वेरी फॉर दिस, सो आर यू एबल टू राइट अ क्वेरी और नॉट, दैट ये चेक किया जाता है. बट कंसेप्चुअली आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट ग्रुप बाय इज नथिंग बट मल्टी डायमेंशनल क्वेरीज. क्योंकि उसको मल्टी डायमेंशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके आउटपुट के ऊपर से हम लोग चार्ट बिल्ड कर सकते हैं. उसके आउटपुट के ऊपर से हम लोग चार्ट बिल्ड कर सकते हैं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Any questions that you have got regarding group by? Now it is good time to ask. Only group by, don't ask where clause and order by. मैं उसके ऊपर जा रहा हूं. Only group by related अगर आपको कुछ questions है, this is good time to ask. Otherwise I'm just asking the next point, that can I combine group by with where clause? Can I combine group by with this? Yes, we are going to talk about that, right? Okay, so as you understood this, assuming that कि आप लोगों ने करके भी देखा है, so there is nothing great into that. Special again only means that multi-dimensional. सौरभ, स्पेशल मीन्स काइंड ऑफ अ multi-dimensional, उसको हम लोग स्पेशल ग्राफ कहते हैं. ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है, bit of mathematical term, nothing much. Okay, now let us continue further. And continuing further मैं कहाँ पर था? Yes, I'm talking about group by on like a multiple columns and this and that, and it's done. Now I'm just going ahead. I'm asking the next stuff. तो सर आपने ये कहा था कि अगर मुझको परफॉर्मेंस बढ़ाना है, लिसन केयरफुली, अगर मुझको परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो मुझको क्या करना चाहिए? मुझको कम से कम डेटा के ऊपर ग्रुपिंग करना चाहिए. मैं फिर से बता रहा हूं, अगर मुझको परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो मुझको कम से कम डेटा के ऊपर ग्रुपिंग करना चाहिए. लेकिन सर यहाँ पर तो जब भी ग्रुप हो रहा है हमारा सारा का सारा डेटा ग्रुप हो गया. यस आई नो, बट यू कैन ऑलवेज यूज ग्रुप बाय with where clause. And we can think of using group by with where clause, that is absolutely allowed. So what where clause does? Where clause, a where clause. Am I audible? Yes, sir. Okay, wait. Look like there was a temporary drop. Just a minute. Yeah, we'll continue. Getting back to this, and I was trying to tell you that when we are using group by, yes, I'm repeating that. Screen, yes, I'll share the screen. Screen is visible. Okay, done. Now let us continue further. तो मैं आपको क्या बता रहा था? हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम लोग ग्रुप बाय हम लोग वेयर क्लॉज के साथ क्यों यूज करते हैं? बिकॉज वेयर क्लॉज विल रिड्यूस द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. वेयर क्लॉज विल पुट सम कंडीशन. सी, अभी मेरे पास 14 एम्प्लॉइज है. अगर 14 एम्प्लॉइज है, मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ तो मेरे को 14 रिकॉर्ड प्रोसेस करने पड़ रहे हैं. लेकिन अगर मैं उसके ऊपर वेयर क्लॉज अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली मेरे कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड्स उसके अंदर से कम हो जाएंगे. So what exactly I'm saying that, have a look at this. When I use where clause, will skip, will filter records from the table, and group by will group the records. A group by will group the records and perform aggregate operations. Obviously using this. So things are very clear into this.
नाउ लेट अस कंटिन्यू फर्दर। तो मैं आपको ये बता रहा था, रुको जरा, करके देखते हैं विद एग्जांपल, हम लोग करके देखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल सिलेक्ट जॉब कॉमा सम ऑफ सैलरी, see it carefully, job comma sum of salary from employee from employee, and I'm simply saying group by job. What will happen over here? What will happen over here? I said that all 14 employees, all 14 employees are sorted, grouped, and sum of salary is done. ऑल 14 एम्प्लॉइज, जितने सारे आपके पास एम्प्लॉई है वो सारे के सारे एम्प्लॉय के ऊपर यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है, और जितने ज्यादा एम्प्लॉय होंगे ऑब्वियसली उतना सॉर्टिंग विल टेक मोर टाइम. Now what I'm saying is that if I just continue further, see it carefully, if I'm continuing further and if I just put some sort of a logic over there, where I'm saying that where department number is not equal to 10, a department number is not equal to 10. Now what exactly I'm saying, I don't need all 14 employees there. I said that I'm already filtering out 3 employees of this. Now you will find that, so 11 employees, 11 employees कौन कौन से, department 20 and 30 will be sorted, will be grouped, and then only those employees sum of salary will be performed. So this is possible, absolutely possible, and I'm saying that this will be a faster operation as compared to grouping all. टू बी फ्रैंक, आपको इसका डिफरेंस इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा. सर क्यों नहीं आएगा? आपके पास हार्डली 14 रिकॉर्ड्स हैं. यू रियली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस ऑफ द स्पीड व्हेन यू आर हैविंग समवेयर लाइक अ मिलियन रिकॉर्ड्स. जबकि पास मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, और मिलियन रिकॉर्ड में से अगर आपने कुछ few 100,000 रिकॉर्ड अगर आपने निकाल दिए, so you will be able to see some of the significant difference as far as speed is concerned. At the moment आपके hardly 14 employees है, so you can just believe me onto the concept. Just remember the syntax. Syntactically, where should come before group by. Syntactically, where should come before group by. Understand this. और तो सर ये कंडीशन हमेशा डिपार्टमेंट के ऊपर लगानी चाहिए क्या? नॉट एट ऑल. मैंने कहा ना कंडीशन आपके पास कुछ भी हो सकती है. आई एम सेइंग दैट लेट अस जस्ट गो अहेड. इन दिस केस आई कैन हैव अ कंडीशन सेइंग दैट इफ द सैलरी इज ग्रेटर देन 1500, सो ऑल दोज एम्प्लॉइज whose salary is greater than 1500, मुझको सिर्फ उनकी सैलरी की सम करनी है. मुझको जिनकी सैलरी 1500 से कम है उनका जॉब वाइज सैलरी कितना है मुझको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. मुझको इंटरेस्ट किसकी सैलरी में है? जो लोगों की सैलरी 1500 से ऊपर है, मुझको सिर्फ उतने ही लोगों को ग्रुप करना है और मुझको उतने ही लोगों के साथ डील करना है. सर ऐसे कितने रिकॉर्ड्स है आपके पास? ऐसे कितने रिकॉर्ड्स है आपके पास? अगर आपको जस्ट चेक करने हैं तो मैं क्विकली चेक करके बताता हूँ. वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1500, ए सैलरी इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1500, ऐसे मेरे पास 8 रिकॉर्ड्स हैं. प्लीज टेक अ लुक एट दिस. ऐसे 8 रिकॉर्ड है. तो यहाँ पर ये जो ग्रुपिंग हो रहा है, ये ग्रुपिंग सिर्फ 8 एम्प्लॉइज का हो रहा है. यहाँ पर जो ग्रुपिंग हो रहा है इट इज ओनली ऑफ 8 एम्प्लॉइज. सो नॉट ऑल 14 एम्प्लॉइज बट only 8 employees. Which 8 employees? whose whose salary is greater than or equal to 1500, whose salary is greater than equal to 1500, only those many records will be sorted, will be grouped, and sum is done. तो रियल वर्ल्ड में इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट कि जब जब आप लोग क्वेरी लिखोगे रियल वर्ल्ड में, मैं आपके असाइनमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, जब आप लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे, स्पेशली आप लोग ह्यूज डेटा सेट्स के ऊपर काम करोगे, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड दैट यू इंश्योर दैट फालतू में सारे के सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर ग्रुप मत करना. व्हेन यू आर डीलिंग विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग पहले सोचो कि आपको इंटरेस्ट किसमें है. आपको जिसमें इंटरेस्ट है उतने ही रिकॉर्ड्स के ऊपर ग्रुपिंग करो, उतने ही रिकॉर्ड के ऊपर सॉर्टिंग करो. दिस इज समथिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. Something you should always remember. Wait for a minute. I'll take up one more example. One more example. Select. Let's say that job. I'm saying that sum of salary. It's okay. From employee, and I'm saying that where job in, and I'm looking for कौन से employees. I'm looking for salesman. इनको मैं कितनी सैलरी देता हूँ. Then probably I'm looking for analyst. इनको मैं कितनी सैलरी देता हूँ. And probably like a managers.
इनको मैं कितनी सैलरी देता हूँ। मुझको प्रेसिडेंट की सैलरी से कोई लेना देना नहीं है, मुझको क्लार्क के सैलरी से भी कोई लेना देना नहीं है। आई एम डूइंग ओनली दिस मच, एंड along with this I am also trying group by. I am also trying group by. Is it possible? My answer is yes, it is very much possible. You can do that. तो सर वेयर के साथ अगर हम लोग सिंगल रो कॉलम यूज करते हैं, सॉरी अगर हम लोग नॉर्मल कॉलम यूज करते हैं, इज इट अलाउड? आई सेड यस, वेरी मच अलाउड। आप लोगों ने जो कल कंडीशन लिख के दिए थे, आई होप आप लोगों ने उसको सीरियसली देखा था। ग्रुप फंक्शन कैन नॉट बी सिलेक्टेड विथ, आई रिपीट, ग्रुप फंक्शन कैन नॉट बी सिलेक्टेड विद द सिंगल कॉलम। सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। मैंने ये नहीं बोला था कि आप उसको वेयर नहीं कर सकते हो। सो वेयर क्लॉज में आप लोग सिंगल कॉलम लगा सकते हो। आप लोग नोट किया, यहाँ पर मैंने जॉब का कॉलम लगाया, यहाँ पर मैंने सैलरी का कॉलम लगाया, मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम लगाया, और यू कैन मेक एनी अदर कॉम्बिनेशन if you are interested in, if you are interested in. So again, please go ahead, quickly try this, and ensure that you are getting the job of only salesman, manager and analyst. You have skipped clerk, you have skipped this president, right? तो आप लोग कुछ चीजें करके देख सकते हो, एंड यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, यू आर वेलकम। सो आपका पहला क्वेश्चन था सर ग्रुप बाय और वेयर क्लॉज हम लोग कंबाइन कर सकते हैं क्या, एंड माय आंसर वाज यस, हम लोग ग्रुप बाय और वेयर क्लॉज आसानी से कंबाइन कर सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। चलो गुड। Now I have got some different question. Listen carefully. I have got some different question. And different question, listen carefully. The question is saying something like this. क्वेश्चन सुनो, हेडिंग में नहीं दूंगा, किसी हेडिंग देते तो फिर सस्पेंस चला जाता है, तो सस्पेंस नहीं जाना चाहिए। लेट अस राइट सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। द माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज समथिंग लाइक दिस, लिसन केयरफुली। फाइंड जॉब्स whose average salary is more than 1000 or 1200. Find the jobs whose average salary is more than 1200. Please understand that. मैं फिर से बता रहा हूं, मुझको उन जॉब्स में इंटरेस्ट है जिनकी एवरेज सैलरी 1200 से ऊपर है। एवरेज सैलरी आई एम टॉकिंग अबाउट। मुझको सम में इंटरेस्ट नहीं है, मुझको एवरेज सैलरी में इंटरेस्ट है। So how I can solve this? I guess it is not really difficult. You can just starting with, आप लोग पहले वो जितने आपको दिख रहे हैं पहले वो आउटपुट तो देख लो पहले, कि नॉट सम ऑफ सैलरी, आई एम लुकिंग फॉर एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी अगर आप लोग देखते हो, प्लीज पे अटेंशन। और एवरेज सैलरी किसका किसका कितना है? एक क्लर्क का 1037 है, मैनेजर का 1400 है, सेल्समैन का 1400 है, इसका मैनेजर का 2758 है, इसका 3000 है, और इसका 5000 है। सो आई अंडरस्टूड दिस। सो 1200 से ऊपर, ये 1200 से ऊपर कौन कौन से हैं? आई अंडरस्टैंड दैट 1200 से ऊपर इतने लोग हैं। आई होप यू आर एबल टू सी। 1200 से ऊपर इतने लोग हैं, इतने लोगों का आपको ये निकालना है। तो बोले सर इसमें डिफिकल्ट क्या है? इट इज वेरी वेरी इजी। हम लोग आराम से जाते हैं एंड वी आर सिंपली राइटिंग, लिसन केयरफुली, हम लोग सीधा सीधा लिख देते हैं वेयर average salary is greater than 1200. Can I write like this? Can I write like this? No, you cannot. You cannot. क्योंकि एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है। देर आर टू एरर्स, लिसन केयरफुली, देर आर टू एरर्स। पहली एरर, आपको पहले ग्रुप करना है, लिसन केयरफुली, और बाद में एवरेज निकालना है। I hope you understand that. Follow the common sense. So first group is to be done, aggregation is to be done, और उसके बाद में चेक करना चाहिए। और दूसरी चीज शायद मैंने आपको कल बताया था, वेयर क्लॉज के अंदर जो चार कंडीशंस आप लोगों ने नोट किए, उस चार कंडीशन में कंडीशन था वेयर क्लॉज के अंदर हम लोग ग्रुप फंक्शन कैन नॉट बी यूज, ऐसे दैट ग्रुप फंक्शंस cannot be used, cannot be used in where clause, वेयर क्लॉज। ये यू रिकॉल दिस एरर, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था। दीज आर द लिमिटेशंस, जो चार लिमिटेशंस आप लोगों ने लिखे हुए हैं उसके अंदर ये एक लिमिटेशन लिखा हुआ है कि हम लोग ग्रुप फंक्शंस वेयर क्लॉज में नहीं लिख सकते हो। आप लोग चाहो तो करके देख सकते हो, और फिर वो आपके नाम से चिल्लाता है, वो आपको बताता है कि इट इज इनवैलिड यूज ऑफ अ ग्रुप फंक्शन, यू आर ट्राइंग टू यूज ग्रुप फंक्शन इनसाइड दिस, इट इज नॉट अलाउड।
इट इज नॉट अलाउड। तो सर ऐसा अगर मेरा रिक्वायरमेंट है, ऐसा अगर मेरा रिक्वायरमेंट है तो मुझको क्या करना चाहिए? अगर ऐसा आपको रिक्वायरमेंट है वेयर यू वांट, वेयर यू वांट कंडीशन टू बी अप्लाइड, यू वांट कंडीशन टू बी अप्लाइड ऑन अ एग्रीगेट फंक्शन, जहां पर आपको एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर कंडीशन लगानी है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, सब क्वेरी की जरूरत नहीं है, नेस्टिंग की जरूरत नहीं है। दिस इज अ प्लेस वेयर वी यूज हैविंग क्लॉज। This is a place where we use the having clause. And what is having clause? Have a look at this. Hey, please pay attention. जो चीज मैंने यहाँ पर where के लिए लिखी है, see it carefully. प्लीज पे अटेंशन, कोड मत करना, जस्ट पे अटेंशन। जो मैंने वेयर के लिए किया है, मैं सिर्फ कहता हूं तुम पहले ग्रुप करो और बाद में तुम कंडीशन चेक करना। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया द वेयर क्लॉज कैन नॉट बी यूज विद द एग्रीगेट फंक्शन। तो सर लेकिन मुझको एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर कंडीशन लगानी है, अब मैं क्या करूं? माय आंसर इज वेरी सिंपल, दिस इज अ प्लेस वेयर यू शुड बी गोइंग फॉर हैविंग। This is a place you should be going for having, and the topic over here was kind of a having clause. Now what is having clause? What is having clause? It is used to filter records or result based on aggregate functions, एग्रीगेट फंक्शन कैलकुलेशन, whatever you can say. So एग्रीगेट फंक्शन का रिजल्ट क्या आता है, उसके ऊपर अगर मुझको कोई कंडीशन लगानी है, इन दैट केस यू कैन नॉट यूज वेयर, बट इन दैट केस यू हैव टू यूज हैविंग। अनदर रूल, हैविंग हैविंग must be used, must be used with group by, must be used with group by। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, डायरेक्टली आप लोग हैविंग नहीं कर सकते हो, आप लोग डायरेक्टली हैविंग नहीं कर सकते हो। जयेश प्लीज रीड व्हाट आई हैव रिटन। मैंने आपको ये नहीं बोला था कि यू कैन नॉट यूज वेयर विद द ग्रुप बाय। क्वेश्चन क्या है? आई एम सेइंग दैट मुझको एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर अगर आपको रिजल्ट दिखाना है, देन यू हैव टू गो विद द, देन यू हैव टू गो विद द हैविंग क्लॉज, ये पहली चीज। और हैविंग मस्ट बी डन आफ्टर ग्रुप बाय। वेयर क्लॉज लगाना है नहीं लगाना है वो आपका चॉइस है। सम ऑफ द केसेस यू मे यूज वेयर क्लॉज, सम ऑफ द केसेस यू मे नॉट यूज वेयर क्लॉज, चॉइस इज योर्स। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं हैविंग अगर लगाना है, देन हैविंग अगर लगाना है तो ग्रुप बाय होना मैंडेटरी है। अगर हैविंग आपको लगाना है तो फिर ग्रुप बाय होना मैंडेटरी है। दिस इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इज इट ओके? सो और एक चीज, तो यूजिंग हैविंग मस्ट बी with group by, and syntactically immediately immediately after group by, immediately after group by। तो आपको उसको ग्रुप बाय के बाद में लगाना है। सो योर हैविंग क्लॉज इज डन, सेकेंड इज डन। नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड थिंग, थर्ड पॉइंट, हैविंग के अंदर हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? हैविंग इज यूज, मैंने वापस ऊपर लिखा है फिर भी एक बार लिख रहा हूं, इज यूज टू स्पेसिफाई और यूज टू पुट condition based on based on based on aggregate functions, aggregate function, or or and दोनों, and or grouped columns, grouped column only, grouped column only। What is the meaning of this? Have a look at this. This is absolutely valid, this will give you correct result, you can check that, you can check that ये आपको रिजल्ट सही सही दे रहा है, ये आपको रिजल्ट सही सही दे रहा है। However, you are trying to use, see it carefully, you are trying to say having salary is greater than 1200, now this is not allowed, this is error, this is error। What is error? Having is used to put condition only on, only on only on aggregate function, aggregate functions, or grouped columns, not other columns, not other columns। हम लोगों ने किसके ऊपर ग्रुपिंग किया है? हमने ग्रुपिंग किया है जॉब के ऊपर। प्लीज पे अटेंशन,
हमने ग्रुपिंग किया है जॉब के ऊपर। अगर आपने जॉब के ऊपर ग्रुपिंग किया है, हैविंग में अपने जॉब लगाया तो वो एक बार एक्सेप्टेड है। हाउएवर आपने सैलरी लगाया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सर, इज इट रियली ट्रू? जस्ट गो अहेड, सी द एरर, एंड इट सेइंग दैट अननोन कॉलम सेल इन हैविंग क्लॉज। उसको कॉलम तक नहीं मिल रहा है, उसको नाम भी नहीं मिल रहा है। वो बोल रहा है कि सैलरी कौन सा है, मैं इसको देखता नहीं, मैं इसको सोचता नहीं, मेरे को इसको समझ में नहीं आता। तो जो जो चीजें आपने यहाँ पर बोली है, जिसके ऊपर आपने ग्रुप किया है, जिसके ऊपर आप लोगों ने कुछ तो ऑपरेशन किया है, सिर्फ उसी को आप लोग हैविंग में डाल सकते हो, बाकी किसी को भी आप लोग हैविंग में नहीं डाल सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वेट फॉर अ मिनट, मुझको एक दो चीजें और करके दिखानी है और उसके बाद में। तो सर यू वांट टू से दैट, यू वांट टू से दैट, तो सर इसका मतलब हम लोग जॉब के ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं। 100% आप यहाँ पर जॉब के ऊपर कंडीशन लगा सकते हो। टेक अ लुक एट दिस। मैंने जानबूझ के एग्जांपल ऊपर लिया था, जानबूझ के एग्जांपल मैंने ऊपर लिया था। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, what I'm doing, i'm trying to get I'm trying to get sum of salary for salesman, analyst and manager. I'm trying to get sum of salary for salesman, analyst and manager. Can I do it using where clause? Absolutely, I can do it using where clause. But wait, something similar I can also do it with the having clause. लेकिन having clause कहां पर लिखना चाहिए? हैविंग क्लॉज कहां पर लिखना चाहिए? हैविंग क्लॉज में ग्रुप बाय के ऊपर नहीं लिख सकता हूं। ग्रुप बाय के ऊपर लिखा तो एरर आएगा। आई एम सेइंग दैट द सेम थिंग आई कैन राइट इट बिलो आफ्टर ग्रुप बाय। टेक अ लुक एट दिस। इफ आई रन अ क्वेरी with this, please pay attention, if I run a query with this, I am getting some result. मैंने where का query रन किया है, मैंने where का query रन किया है। let us take a look at the result. ये मेरे where की query का result है। okay, that is good. ये मेरे वेयर के क्वेरी का रिजल्ट है। विद डिजाइन लेना चाहिए ना, राइट। और बाद में ये जो मेरा हैविंग का क्वेरी है, ये मेरे हैविंग का क्वेरी का रिजल्ट है। लेट मी जस्ट रन दिस वंस अगेन, एंड देयर आई फाइंड दैट, इज इट वर्किंग? इज इट गिविंग यू द सेम रिजल्ट? टेक अ लुक एट दिस। इज इट गिविंग यू द सेम रिजल्ट? एब्सोल्युटली। तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो जॉब कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है? ये ग्रुप कॉलम है। सिंस ग्रुप कॉलम, सिंस इट इज ग्रुप कॉलम, चॉइस इज योर्स। आप लोग नॉर्मल वेयर क्लॉज के साथ यूज कर सकते हो, इट इज अप टू यू। आप लोग चाहो तो उसको हैविंग के साथ भी यूज कर सकते हो, चॉइस इज अप टू यू। आई वॉन्ट यू पीपल टू गो अहेड एंड ट्राई दिस वंस। क्या आपको दोनों केसेस में रिजल्ट आ रहा है? और ऊपर के जो दो तीन हमने ट्राई किए, वो भी एक बार करके देखो। और फिर मुझको आपको इसके बारे में कुछ बताना है कि क्या करना चाहिए। कि कर सकते हैं वो बात अलग है, करने के लिए तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज जो इंसान कर सकता है वो इंसान ने करनी नहीं चाहिए, ये आपको पता होगा। सो नाउ विच वन इज बेटर? Yes, we will talk about which one is efficient. Pankaj, hold on. We will definitely talk about which one is efficient, which one is not efficient, how it will work, and so on. पहले करके देखो। बाय द वे, इफ यू एट ऑल फाइंड दैट कि आपको करने के लिए टाइम कम मिल रहा है, प्लीज लेट मी नो, आई विल वेट फॉर यू। If you didn't ask, it only means that you people are doing, either you people are doing or you're not interested in doing, either one. अगर आप लोग थर्ड कैटेगरी में, सर हम लोग कर रहे हैं लेकिन आप फास्ट जा रहे हो, सो इफ यू एट ऑल फाइंड, मैं हर एक लॉजिकल ब्रेक में मैं रुकने की कोशिश करता हूं, डेफिनेटली। स्टिल टाइम इज नॉट सफिशिएंट, लेट मी नो, आई विल वेट लिटिल मोर फॉर यू। गुड। समवन हैज आस्क्ड मी, क्या हम लोग हैविंग क्लॉज के अंदर सिंगल रो फंक्शन यूज कर सकते हैं? आप लोग सिंगल रो फंक्शन ऑन दिस कॉलम यूज कर सकते हो। ग्रुप कॉलम के ऊपर आप लोग डायरेक्टली ग्रुप कॉलम यूज कर सकते हो। आप चाहो तो हैविंग क्लॉज के अंदर ग्रुप कॉलम के ऊपर आप लोग सिंगल रो फंक्शन यूज कर सकते हो, ग्रुप्ड कॉलम के ऊपर, नॉन ग्रुप कॉलम के ऊपर नहीं।
नॉन ग्रुप कॉलम के ऊपर नहीं, राइट। चलो अब आपको ये मेजॉरिटी पीपल हैव डन इट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट एग्जीक्यूशन कैसे होगा। एग्जीक्यूशन कैसे होगा? प्लीज सी द ऑल एग्जांपल्स, डोंट लुक एट ओनली वन एग्जांपल। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डोंट लुक एट ओनली वन एग्जांपल। करेक्ट। मैंने आपको यहां पर हैविंग क्लॉज यूज करके दिखाया, जहां पर मैंने एवरेज ऑफ सैलरी किया है। यहां पर भी हम लोगों ने हैविंग क्लॉज दिखाया है, या नहीं, यहां पर हैविंग क्लॉज नहीं देखा है। यहां पर हमने हैविंग क्लॉज विद सैलरी किया है, यहां पर हम लोगों ने हैविंग क्लॉज विद जॉब किया है। करेक्ट। आई गेस मोहन यू गॉट द पॉइंट व्हाट यू आर सेइंग, राइट। और यहां पर मैंने क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है और दो बार लिखा है ये पॉइंट, प्लीज रीड दैट। हैविंग क्लॉज में या तो आप लोग कंडीशन एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर से लगा सकते हो, ऑब्वियसली एग्रीगेट फंक्शन किसी भी कॉलम के ऊपर चलेगा, ऑप्शन नंबर वन। या फिर ग्रुप्ड कॉलम के ऊपर लगा सकते हो। ग्रुप्ड कॉलम मतलब जिस कॉलम के ऊपर आपने ग्रुप बाय किया है, ग्रुप बाय किया है। अब एग्जैक्टली नाउ यू नो इट डिपेंड्स ऑन, आपका क्वेश्चन इंग्लिश में है तो वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन बोथ वेज। आई होप दैट इज क्लियर, आइदर दिस और दैट। हम लोग कहां पर थे? आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू अबाउट दैट। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। How this will execute, how this will execute in this particular query. In this particular query you are saying that job and salary is to be selected. In this query, from the records, job and salary is to be selected, but job और salary सबके मेमोरी में लेने हैं क्या? नहीं, सबके जॉब और सैलरी मेमोरी में नहीं उठाने। सबके जॉब और सैलरी मेमोरी के अंदर नहीं उठाने। किसके उठाने? मुझको जॉब और सैलरी सिर्फ सेल्समैन, एनालिस्ट और मैनेजर का मेमोरी में लेना है। जॉब और सैलरी मुझको सिर्फ सेल्समैन, एनालिस्ट और मैनेजर का मेमोरी में लेना है। मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूं। सो यहां से जब क्वेरी जा रहा है, मैं वेयर क्लॉज की बात कर रहा हूं, यहां से जब क्वेरी जा रहा है तो सारे के सारे रिकॉर्ड मेमोरी में नहीं आ रहे, सिर्फ वही रिकॉर्ड हम लोग मेमोरी में लोड कर रहे हैं जिनका जॉब क्या क्या है, मैनेजर है, प्रेसिडेंट है, नहीं मैनेजर है, इज दैट, हमने क्या क्या कंडीशन दिया था, सेल्समैन, एनालिस्ट एंड मैनेजर। सेल्समैन है, एनालिस्ट है एंड मैनेजर है, सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड मेमोरी में लोड हो रहे हैं, उतने ही रिकॉर्ड सॉर्ट हो रहे हैं, उतने ही रिकॉर्ड ग्रुप हो रहे हैं, उतने ही रिकॉर्ड के ऊपर एग्रीगेशन हो रहा है और फाइनली रिजल्ट आपके क्लाइंट को भेजा जा रहा है। दिस वाज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ वेयर क्लॉज। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, जब हम लोग वेयर क्लॉज से लिखते हैं तो यहां पर क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेरी। जब हम लोग वेयर क्लॉज से लिखते हैं तो क्या होता है, वेयर क्लॉज क्वेरी इज फायर्ड ओवर एयर। सो यहां से सारे रिकॉर्ड मेमोरी में लोड नहीं किए जाते, सिर्फ वही रिकॉर्ड मेमोरी में लोड किए जाते हैं जिनके लिए वेयर कंडीशन एप्लीकेबल है। तो वेयर कंडीशन किस किस के लिए एप्लीकेबल है? वेयर कंडीशन है एनालिस्ट, मैनेजर एंड सेल्समैन। तो जिनके लिए कंडीशन एप्लीकेबल है उतने ही रिकॉर्ड मेमोरी में लोड होते हैं। क्लार्क एंड प्रेसिडेंट अभी यहां पर लोड नहीं होने वाले, उतने ही रिकॉर्ड यहां पर सॉर्ट होते हैं, उतने ही रिकॉर्ड यहां पर ग्रुप होते हैं, उतने ही रिकॉर्ड एग्रीगेट होते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट वापस से क्लाइंट की तरफ भेजा जाता है। दिस इज हाउ योर वेयर क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट सर हाउ हैविंग क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड? नाउ हैव अ लुक एट दिस। हम लोग हैविंग में भी वही कंडीशन दे सकते हैं, आउटपुट भी वही आता है, इट्स नॉट अबाउट आउटपुट, बट हाउ द एग्जीक्यूशन इज डन। एग्जीक्यूशन आपने सिलेक्ट में सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए बोला है, आपने कोई सिलेक्ट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाया। तो जितने सारे एम्प्लॉइज है, 14 एम्प्लॉइज, ऑल 14 एम्प्लॉइज आर लोडेड इनटू द मेमोरी, all 14 employees are loaded into the memory. When all 14 employees are loaded into the memory, after that all 14 employees are sorted, all 14 employees are grouped, all 14 employees are done aggregation. Listen, तो आपके जो 5 जॉब्स है, पांचों जॉब्स के लिए एग्रीगेशन किया गया, और पांचों जॉब के बाद में एग्रीगेशन करने के बाद में, एग्रीगेशन करने के बाद में फिर वेयर सॉरी हैविंग क्लॉज अप्लाई किया गया, और हैविंग क्लॉज कह रहा है कि मेरे को क्लार्क और प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। उसके बाद में अपने क्लार्क और प्रेसिडेंट को निकाल दिया, और जो बचा हुआ रिजल्ट था, ये रिजल्ट आपने क्लाइंट को भेजा। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, विल इज हैविंग इज फास्टर और इज इट स्लोअर? आपका हैविंग फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है? डेफिनेटली इन दिस केस माय हैविंग इज गेटिंग स्लोअर। क्यों? आपके पास जितने एम्प्लॉय थे, आपने सबको सॉर्ट करने में तो वक्त बर्बाद कर ही दिया।
आपने सबको सम करने में भी वक्त बर्बाद कर दिया. सो यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड योर लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग दैट एग्रीगेट ऑपरेशंस, डूइंग दैट ग्रुप ऑपरेशन, डूइंग दैट सॉर्ट ऑपरेशन, और बाद में जाके कंडीशन चेक कर रहे हो. सो यू आर अननेसेसरी वेस्टिंग योर टाइम. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, द पॉइंट टू बी टेकन, इवन दो वी कैन यूज, कहां पर गया, having is used to put the condition on aggregate function or grouped column only. However, 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 using, however, using having clause on grouped columns, grouped column, मैं aggregate function की बात नहीं कर रहा हूं, grouped columns slow down the execution, slow down the execution. So it is recommended, it is recommended to use where clause. It is recommended to where clause for such scenario. So if you ask me personally, sir having कब करना है, मेरा आंसर बहुत ही सिंपल है. सिंटैक्टिकली क्या अलाउड होता है, क्या अलाउड नहीं होता है, मैंने आपको बताया. बट हैविंग आपको सिर्फ तभी करना चाहिए जहां पर आपको एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर कंडीशन लगाना हो. हैविंग आपको सिर्फ तभी करना चाहिए जहां पर आपको एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर कंडीशन लगाना हो. बाकी केसेस में आप लोगों ने नहीं करना चाहिए. दिस इज पीरियड. आई होप ग्रुप बाय इज क्लियर टू एवरीवन, और ग्रुप बाय के साथ जो हैविंग होता है दैट इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन. यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज, यू आर वेलकम. इफ नॉट, मैं ऑर्डर बाय के ऊपर जा रहा हूं. क्वेश्चन से प्लीज मत मिक्स मत करना, सो दैट यू नो वी कैन लर्न स्टेप बाय स्टेप. चलो गुड. So far, if it is clear, now my next question is that, listen carefully. अब मैं आगे जा रहा हूं, अब मैं आगे जा रहा हूं, and I'm some, putting some problem statement once again. I'm saying that sort, listen, absolutely. आकाश, आप मल्टीपल चीजों के ऊपर, मल्टीपल कॉलम के ऊपर मल्टीपल डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम. और अभी हम लोग दूसरे कॉलम के ऊपर ही लगा रहे हैं. अभी हम लोग, अगर हम लोग नोट किया, हमने सैलरी के कॉलम के ऊपर ही लगाया हुआ है. आप लोग चाहो सर सैलरी नहीं, मुझको कमीशन के कॉलम के ऊपर लगाना है, यहाँ पर सिलेक्ट में मेरे को सैलरी सिलेक्ट करनी है, दैट इज ऑल्सो अलाउड, दैट इज ऑल्सो अलाउड, दैट ऑल्सो यू नो कंसिडर्ड, नो प्रॉब्लम. हमें कहां पर था? confused in aggregated function. Aggregated function मतलब group function. रिद्धि, we have got total 5 group functions जो हम लोग बात कर रहे हैं. count function, sum function, average function, max function and min function. So जब मैं आपको aggregate function की बात कर रहा हूं, तो मैं इन पांचों में से कोई तो function की बात कर रहा हूं. Is that clear? That's it. Aggregated function का मतलब है सीधा सीधा ग्रुप फंक्शन, और अभी मैंने आपको सिर्फ 5 ही फंक्शन पढ़ाए, और इतने 5 अगर आपको आते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, नॉट टू वरी अबाउट इट. ओके, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एंड वी आर सीइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉर्ट एंड व्हाट इज दैट, सॉर्ट द आउटपुट, लिसन केयरफुली, सॉर्ट द आउटपुट ऑफ, आउटपुट क्या कह रहा हूं, सॉरी, प्रिंट, print average salary per job in sorted order of job, right, is the first. Second question, print average salary per job in descending order, in descending order of average salary, in descending order of average salary. So let us see and let us go step by step. ये पहले तो जॉब और एवरेज सैलरी फिर से एक बार ट्राई करते हैं. लेट मी गो अहेड, सिलेक्ट, आई एम हैविंग जॉब, आई एम हैविंग एवरेज सैलरी, average salary from EMP, from EMP, and I'm saying that it is to be grouped by, it is to be grouped by job. ये मेरे को दिख तो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सॉर्टेड, ये मेरे को दिख तो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है. अनफॉर्चुनेटली ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है. आई एम नॉट एबल टू सी इट इन अ सॉर्टेड ऑर्डर. सर सॉर्टेड किसका नहीं है? ये किसी का भी सॉर्टेड नहीं है. ना तो एवरेज के हिसाब से सॉर्टेड है, ना तो जॉब के हिसाब से सॉर्टेड है. आई रिपीट वंस अगेन, ना तो एवरेज के हिसाब से सॉर्टेड है, ना तो जॉब के हिसाब से सॉर्टेड है.
ये किसी से भी सॉर्टेड नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूं, पहले मुझको इसको जॉब के हिसाब से सॉर्ट करना है एक क्वेरी में, और दूसरी क्वेरी में मुझको इसको सैलरी के हिसाब से सॉर्ट करना है। सो इज इट पॉसिबल? एंड माय आंसर इज यस, माय आंसर इज यस। ऑल आई नीड टू डू इज दैट, go ahead, use order by, use order by job. Please ensure that you can use order by after the, you can use order by after the group by. अगर having लगा रहे हो तो after the having, so after group by, after having आप लोग order by लगा सकते हो. And then you find that now it is alphabetical sorting, and now you take a look at this. Now it is alphabetical sorting of this: analyst, clerk, manager, president, salesman. Okay, that is good. Analyst, clerk, manager, president, salesman. So now things are like well organized as far as jobs are concerned. As far as jobs are concerned. Lekin, my question is that, so what if I want to sort it not by this, but I want to sort it by the salary? So is it possible that I can sort it by the average salary? I said yes, you can sort it by the average salary, and same thing can be done in 2-3 different ways. So let me show you one by one. एक तरीका है कि मैं इसको लिखता हूं एवरेज सैलरी डिसेंडिंग, एवरेज सैलरी डिसेंडिंग। टेक अ लुक एट दिस, मैंने ऑपरेटर फिर से लगाया हुआ है, एंड 5000 इज हाईएस्ट, 3000, 2758, 1400, 1037. yes, it is done. This is one of the way I can do it. What is second way? मैंने आपको उस दिन शायद बताया था, ऑर्डर बाय में आप लोग सिलेक्शन का ऑर्डर लगा सकते हो। सो इट इज लाइक ऑर्डर बाय 2। ये मैंने आपको बताया था, ऑर्डर बाय के अंदर हम लोग कॉलम का नंबर लगा सकते हैं, कॉलम का नंबर। सो सिलेक्ट के केस में ये पहला ऑर्डर है, और सिलेक्ट में ये सेकंड है। ये हमने ऑर्डर बाय के साथ पढ़ा हुआ था क्या? यस। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो अब मैं यहाँ कह रहा हूं, जो सेकंड वाला है उस सेकंड कॉलम से, सो सॉर्ट बाय सेकंड कॉलम। मैं आपके रेफरेंस के लिए लिखता हूं, sort by second column in select, in select. So select के अंदर का जो सेकंड कॉलम है उससे सॉर्ट करो। ओ दैट इज ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ यू, गिविंग अ सेम रिजल्ट। वेट फॉर अ मिनट, मैंने और एक तरीका आपको बताया था, एनीवन रिकॉल दैट? ऑर्डर बाय में हम लोग और एक चीज कर सकते हैं, सेम थिंग। एनीवन रिकॉल व्हाट इज अनदर वे दैट वी कैन डू दैट? Another way that we can do that, yes, we can also use the alias for that. So you can simply say that it is avg cell, and instead of writing that 1 2 3 4 which is highly non readable, तो order by के अंदर alias यूज करना अलाउड होता है, ऑर्डर बाय के अंदर अलायस यूज करना अलाउड होता है। सो दैट इज समथिंग वी कैन डू इट। तो द प्रॉब्लम दैट आई हैव पुट इट देयर, ए प्रॉब्लम क्या था? प्रिंट एवरेज सैलरी पर जॉब इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एवरेज सैलरी। द सेम थिंग आई कैन डू इट बाय पुटिंग दिस एक्सप्रेशन ओवर देयर। अलाउड है? अलाउड है। It is same thing, I can give it by the column number. Is it allowed? Yes, that is also allowed. And a third thing, I'm also saying that I also want to see, I also want to see the order by with giving alias. So किसी भी way से कर लो, ultimately it is going to give you the same result. And this point where I want to add that it is a group by with order by, a group by with order by. I hope you people are trying this. डोंट वरी, हम लोग लिमिट के ऊपर भी आते हैं। वेट फॉर अ मिनट, कैन वी यूज, समवन वाज आस्किंग दैट, कैन वी यूज ऑर्डर बाय इन, सॉरी, कैन वी यूज एग्रीगेट फंक्शन इनसाइड ऑर्डर बाय? आई गेस मैंने यूज करके दिखाया ना अभी। सी द एग्जांपल, थर्ड लास्ट एग्जांपल। Sham is saying that once you said that we cannot perform operation in a computed column. You cannot perform the operation in a computed column. I repeat once again, I repeat once again, I said that I cannot perform the operation on a computed column. मतलब computed column वापिस से हम लोग select में नहीं ले सकते। जब मैं आपको computed column का टॉपिक पढ़ा रहा था, तब मैं आपको पढ़ा रहा था कि हम लोग उसको वापिस से select में नहीं ले सकते, और ये मैंने आपको करके भी दिखाया, ये हमने करके भी दिखाया। लाइक हम लोगों ने बुक का जीएसटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, लेकिन हम लोग बुक का प्राइस प्लस जीएसटी ये हम लोग वापस से कंप्यूटेड कॉलम में नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बताया था। बट उसके बाद में जब मैंने आपको ऑर्डर बाय पढ़ाया, तब मैंने आपको ये भी बताया था कंप्यूटेड कॉलम के ऊपर हम लोग कोई कंप्यूटेशन आगे नहीं कर सकते, बट हम उसको ऑर्डरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर।
सो जसवंत, आई गेस ये हमने ऑर्डर बाय के अंदर, नहीं जसवंत नहीं, समवन किसने पूछा था, मैं भूल गया, सो प्लीज चेक दैट इट इज देयर। जसवंत का कुछ और क्वेश्चन है, व्हाट इफ वी नीड बोथ कॉलम इन ऑर्डर बाय, both column in order by, see you can always have both column in order by, but it doesn't make a difference. Yes, I am waiting Sachin. तो मैं ये बता रहा हूं, द क्वेश्चन समवन इज आस्किंग दैट सर मुझको अगर दोनों ऑर्डर बाय में चाहिए तो हम लोग दोनों ऑर्डर बाय में कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली कर सकते हो, बट उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आई रिपीट वंस अगेन, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, करके देखो। Can you do that? Can I write something like this? Job, comma, average salary. Yes, I can do that. लेकिन ऑर्डर बाय में जब लोग मल्टीपल कॉलम लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है, अगर पहला वाला अगर डुप्लीकेट हो रहा है, पहला वाला अगर सेम आ रहा है तो दूसरे को सॉर्ट करो। वैसे भी यहाँ पर सारे के सारे जॉब आपको यूनिक ही आ रहा है, अगर सारे जॉब आपको यूनिक आ रहा है तो उसके बाद में सेकेंड लेवल सॉर्ट का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, राइट? हु हैज आस्क्ड दैट? जसवंत, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम वेटिंग। आप लोग करके देखो और कुछ गुड। अमरेंद्र, वी विल टेक अप, गिव मी अ मिनट। यस एब्सोल्युटली, चलो, ऑल राइट, गुड। सचिन, आई गेस आई एम कंटिन्यूइंग नाउ। या, चलो, गुड। As I said that, let me know if you are taking time. So definitely I will wait for you, provided you ask me. और रुको जरा, there is one question someone has asked. Someone has asked the question. Listen the question. Question is not at all difficult. It is very simple, and it is not even related to sorting. It is not even related to sorting. But the question is that यहाँ पर ये कुछ बहुत ही बड़े-बड़े नंबर आ रहे हैं. Sir, I am looking for up to 2 places of decimal. I want to restrict this up to 2 places of decimal. Is it possible? And my answer is yes, it is very much possible. So you want to round it up to 2 places of decimal. So जो भी आपका average का output है, go ahead and round it further. Round it further up to 2 places of decimal as you are looking for. Go ahead, try to run this. अच्छा, round का spelling सही होना चाहिए लेकिन, okay. So round it up to 2 places of decimal. We'll talk about, and there is an answer, right? ये किसी ने पूछा था, प्लीज टेक अ लुक एट दिस, और ये आप लोग कर सकते हो। सो अगर आपको उसके साथ राउंडिंग लगाना है, डेफिनेटली लगा सकते हो, इट विल वर्क एज वेल। ओके, नो प्रॉब्लम। रुको जरा, एक और चीज देखते हैं इन अ सीक्वेंस, और बाद में हम लोग ब्रेक लेंगे। एज समवन वाज आस्किंग मी, सर सिर्फ ऑर्डर बाय करके रुकोगे क्या, लिमिट नहीं कराओगे क्या? हाँ, डेफिनेटली कराएंगे ना, सो नो डाउट ऑन दैट। सो वी विल सी दैट हाउ वी कैन यूज ग्रुप बाय विथ ऑर्डर बाय, विथ ऑर्डर बाय एंड लिमिट एज वेल। हम लोग ऐसे भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं। नाउ लिसन केयरफुली, आई एम आई वांट टू फाइंड आउट, फाइंड द डिपार्टमेंट which spend maximum on salary of employees. This is a problem statement. Find the department which spend maximum on salary on department. मैंने से मैक्सिमम, यहाँ पर मुझको मैक्सिमम फंक्शन से लेना देना नहीं है, जिन लोगों का इंग्लिश अच्छा नहीं है मेरे जैसा, उनके लिए मैं लिखता हूँ हाईएस्ट ऑन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। तो अभी यहाँ पर मुझको क्या करना है, मुझको डिपार्टमेंट वाइज हर एक का टोटल सैलरी निकालना है, डिपार्टमेंट वाइज हर एक का टोटल सैलरी निकालना है, और टोटल सैलरी निकालने के बाद में मुझको उसको सॉर्ट करना है बाय द सैलरी, और उसमें से जो भी टॉप मोस्ट है वो मुझको टॉप मोस्ट कंसिडर करना है, करेक्ट? सो आई एम जस्ट गोइंग अहेड, लेट मी राइट इट। So one by one, select department number. I'm saying sum of salary, and see the way you are doing step by step. कल आपको कुछ नए असाइनमेंट आएंगे, and for the new assignment, I want you people to go step by step. जब जब लोग ग्रुप बाय के असाइनमेंट स्टेप बाय स्टेप नहीं करते,
लोगों का बहुत कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है. सो सी टू इट दैट you don't lose your experience, sorry, lose your confidence. It is very important. And simply say that it is by group by डिपार्टमेंट नंबर. ये मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट का टोटल सम मेरे पास यहाँ पर है. बट सर दिस मे और मे नॉट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर. तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको सॉर्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे. सॉर्टिंग कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आफ्टर ग्रुप आई कैन थिंक ऑफ यूजिंग ऑर्डर बाय, और मैं इसको नाम देता हूं एज सम सेल और व्हाटएवर. एंड आई एम सेइंग दैट सम सेल, दिस इज जस्ट टू मेक इट रीडेबल, descending, some cell descending, and I'm able to see, okay, I'm getting the result in a properly descending order. Once I get the result in a descending order, मुझको इसमें से टॉप मोस्ट चाहिए. क्या करूं? जो भी रिजल्ट मुझको यहां पर दिख रहा है, मुझको इसमें से टॉप मोस्ट चाहिए, either top one. How do I get the top one? How do I get the first one? Absolutely right. Go ahead and say that limit one. Simply say the limit one, and that's it. You copy it, you paste it, and there is your answer. And there is your answer. It's very simple. You get the topmost one only, not anything else. रुको जरा, एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ट्राई करते हैं. I say that find the department which spend a second lowest on income of employees. And when I say that income of employees, I'm saying that it is salary plus commission, right? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. व्हाट आई सेड, यू गो स्टेप बाय स्टेप. पहले आप लोग डिपार्टमेंट नंबर से उसको ग्रुप करवा लो. अगर हम लोग डिपार्टमेंट में, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं पिछला वाला प्रॉब्लम, और फिर अगला वाला सॉल्व करेंगे. डिपार्टमेंट नंबर से आप उसको ग्रुप करवा लो. अब ये जो कुछ भी रिजल्ट आ रहा है, ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. लेकिन मुझको हाईएस्ट स्पेंडिंग वाला डिपार्टमेंट चाहिए. अगर आपको हाईएस्ट स्पेंडिंग वाला डिपार्टमेंट चाहिए, तो पहले आई जस्ट वांट टू इंश्योर दैट इट इज सॉर्टेड बाय द सम ऑफ सैलरी इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. I want to sort it by the sum of salary in a descending order. So I just go ahead. I made it again a statement like this. And using this statement, I'm saying that order by sum salary. Order by sum salary, this ensures that जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा पे करने वाला जो डिपार्टमेंट है, वो ऑन द टॉप आएगा, और सबसे कम पे करने वाला डिपार्टमेंट जो है, वो एट द बॉटम आएगा. सो अगेन दैट इज क्लियर. नाउ वंस दैट इज क्लियर, आई एम सेइंग दैट आई एम लुकिंग फॉर द हाईएस्ट वन. तो मुझको जो कुछ भी रिजल्ट आ रहा है, उसके ऊपर मुझको लिमिट वन लगाना है. जो भी रिजल्ट आ रहा है, उसके ऊपर लिमिट वन लगा रहा है, विच इंश्योर्स दैट ये जो पहला वाला डिपार्टमेंट है, ये आपको यहां पर मिल रहा है. इज दैट क्लियर? Okay, good. And now let us solve the second one. Second one is bit more complicated. Second one is bit more complicated because यहां पर मैं हाईएस्ट नहीं पूछ रहा हूं, एक तो मैं लोएस्ट पूछ रहा हूं, वो भी सेकेंड लोएस्ट पूछ रहा हूं, वो भी सैलरी के ऊपर नहीं पूछ रहा हूं, इनकम के ऊपर पूछ रहा हूं, सैलरी प्लस कमीशन के ऊपर पूछ रहा हूं. अब आपको शांति से स्टेप बाय स्टेप सोच सोच के जाना पड़ेगा. तो लेट अस जस्ट गो अहेड एंड लेट अस लुक फॉर सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर. यू आर लुकिंग फॉर सम ऑफ. आपको सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए, आपको सम चाहिए, लेकिन सम किसका चाहिए? सैलरी प्लस कमीशन का चाहिए. आपको सम किसका चाहिए? सैलरी प्लस कमीशन का चाहिए. सो आई एम सेइंग दैट इट इज अ सम ऑफ इनकम. इट इज सम ऑफ इनकम. इसमें गड़बड़ है. कोई मुझको बताएगा इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है, अगर कमीशन आपका नल हुआ, अगर आपका कमीशन नल हुआ, तो सम प्लस सैलरी नल होने वाला है, एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी अ काइंड ऑफ अ मिसलीडिंग रिजल्ट. दैट इज गोइंग टू गिव मी अ मिसलीडिंग रिजल्ट. तो सर अब मैं क्या करूं? आप क्या कर सकते हो? इसको नल मत होने देना, और अगर वो नल है तो उसको जीरो ट्रीट करना. एब्सोल्युटली करेक्ट. गो अहेड. चलो आप लोगों को याद आ रहा है, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. दैट इज गुड. सो इफ नल 0.0, if null 0.0, I am able to manage that. This is done. This is done. And you have got, let's say, group by. You have done that. अब क्या हुआ?
स्पेलिंग मिस्टेक में कुछ गड़बड़ किया मैंने। अच्छा, ग्रुप बाय कीवर्ड इज मिसिंग, ग्रुप बाय एंड डिपार्टमेंट नंबर। सो वापस एक बार, पहले जो आपको बेसिक ऑपरेशन करना है वो पहले कर लो। सो मुझको पता चला डिपार्टमेंट 20 इज पेंडिंग दिस, 30 इज पेंडिंग दिस एंड 10 इज पेंडिंग दिस, बट ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। अब मुझको कौन सा ऑर्डर चाहिए? सेकेंड लोएस्ट। इस सेकेंड लोएस्ट ऑर्डर के लिए मुझको असेंडिंग सॉर्ट करना चाहिए, डिसेंडिंग सॉर्ट करना चाहिए? सेकेंड लोएस्ट के लिए मुझको असेंडिंग सॉर्ट करना चाहिए, डिसेंडिंग सॉर्ट में करना चाहिए? यस, असेंडिंग सॉर्ट करना चाहिए। सो लेट मी जस्ट गो अहेड। नेक्स्ट स्टेप, आई एम राइटिंग, प्लीज नोट द वे आई एम राइटिंग अ क्वेरी। आई रिक्वेस्ट यू, इट इज नॉट अबाउट फाइनल क्वेरी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मैं क्वेरी लिखता हूं तो यहां वहां देखते हैं, डायरेक्टली फाइनल क्वेरी जब आता है तो सामने देखते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है क्वेरी, कब कैसे समझ में आएगा? करेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, एक किससे ऑर्डर बाय करना है? ये सम इनकम से ऑर्डर बाय करना है। इसका जो सम इनकम, अरे सम इनकम है, इससे ऑर्डर बाय करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। वैसे नहीं लिखूंगा तो भी असेंडिंग ही होता है, आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड दैट, स्टिल आई एम राइटिंग इट फॉर सेक ऑफ रीडेबिलिटी। सो दिस इज लोएस्ट, this is lowest, this is second lowest, this is third lowest, and this way it is sorted. Okay, that is good. अब मुझको इसमें से second highest चाहिए. How do I get second highest? Yes, absolutely. Use limit, skip first, take the next one. इसमें से पहला वाला छोड़ दो, ये पहला वाला छोड़ दो, and then take up the second one. Second one, that is the department 20. Okay, that is department 20. I just take this and I found this. So this is spending second lowest. This is spending second lowest on their income, employee income. I hope this is clear. आदिति 2,1 में पहले दो स्किप हो जाएंगे, हमें एक स्किप करना है और उसके आगे वाला लेना है। वी आर लुकिंग फॉर द सेकेंड लोएस्ट, राइट? ओके, चलो अभी आप लोग इसको करके देखो, लेट मी नो इफ इट इज गोइंग वेल। वी कैन टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। वी हैव सीन द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कैसे कैसे हम लोग मिक्स कर सकते हैं, एंड आफ्टर द ब्रेक we can, if there are any questions, we will take up those questions, right? And otherwise we will start with some new topic. Okay, welcome back. So there is a question, when we are using a group by, can we nest group function under group function? Janvi, why don't you try it? The computer is in front of you, करके देखो if you can. So something, you know, getting sum of average or getting average of sum, it really doesn't make any sense for me. So कभी मैंने करके नहीं देखा, आप लोग करके देख सकते हो, right? Anyway, so definitely the point over here, हाँ, so this is good question. धनंजय का कुछ क्वेश्चन है, what is the difference between distinct and group by? Please note that distinct will give you unique, distinct will give you unique, and group by will give you unique, and you can also perform the aggregate operations. I repeat once again, distinct will give you unique, group by will give you the kind of unique grouped columns, plus you can perform the aggregate operation. I hope Dhananjay it is clear. डिस्टिंक्ट के अंदर हम लोग एग्रीगेट ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ग्रुप बाय के साथ हम लोग कुछ ना कुछ तो एग्रीगेट ऑपरेशन कर पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज फॉर श्योर. दिस इज समथिंग we can say, but that was a good question. Anyway, आप लोग नोट करना, क्वेश्चन वाज गुड. तो अगर हम लोग टोटल सिलेक्ट का, प्लीज नोट, अगर हम लोग टोटल सिलेक्ट का सिंटैक्स एक बार देख ले तो आपको पता चलेगा हम लोग सिलेक्ट के सिंटैक्स में क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं. मैं सिंटैक्स की बात कर रहा हूं. सो सिलेक्ट के सिंटैक्स, यू नो, इट गोज समथिंग लाइक दिस, स्टेप बाय स्टेप, step by step. So we can have something starting with select, select. We can have column 1, column 2, column 3, whatever that you want to do. So like column, and not necessarily column, it could be like even expression 1, expression 2. Yes, you can mention
the expressions or columns, whichever that you feel it comfortable, right? Once you have done that, from you have to write table name. So far this is something that we can do. After that, if you are interested in, you can go ahead, you can put the where, and you can apply some sort of a condition on some column, condition on some column. Co-host, you can take students in. Then we have got like a where clause, and then on the top of where clause we can have something called as a group by. After we have got like a group by you can specify by some column, one column, or it can be like multiple columns. It can be like one column or it can be multiple columns. We can have group by. After group by, we can write having. If you want, again, depending on the requirement, you may write having, and here you have got condition. But typically over here, the condition is always on an aggregate function. Condition is always on an aggregate function. If you still need further, you can go ahead, you can have order by, and again, order by either by some column or by some condition, or by some, what is that, expression. It is up to you. Again, one or more column or expression, yes, we can have order by onto that. And after that, we may have something like limit and something like this. So अभी हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, सिंटैक्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर सिंटैक्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. यू ऑलवेज इंश्योर दैट वेयर हैज टू बी रिटन बिफोर ग्रुप बाय, योर हैविंग हैज टू बी रिटन आफ्टर ग्रुप बाय. अगर ऑर्डर बाय आपको लिखना है तो वो ग्रुप बाय हैविंग उसके बाद में आएगा. और लिमिट शुड बी लाइक ऑलवेज एंड क्लॉज. अगेन, आपको सब कुछ हर एक क्वेरी में लिखना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है. इफ यू वांट, you can put all the clauses in one query. You may put all the clauses in one query, but what is important is that the sequence matters a lot. Sequence matters a lot. I hope you got the point that I want to tell you. यहाँ पर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. और यही चीज अगर आप लोग हेल्प देखते थे, हेल्प ऑफ सिलेक्ट, वो आपको ऐसा ही कुछ बताने की कोशिश कर रहा था. ऑब्वियसली उसके हेल्प में और बहुत सारी चीजें कंबाइन हो जाती है, एंड दैट मेक्स इट वेरी हेवी फॉर द बिगिनर्स. आई नो it makes it very heavy for the beginners, but it is worth understanding this sequence and by adding this sequence. यहाँ पर दिमाग मत नहीं लगाते. So I have seen that, lot of time some absolute beginners come down and they say that sir order by को group by से पहले लगाने में प्रॉब्लम क्या है. अब प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, but that is not the syntax. The syntax is that order by has to be written after group by. That is the syntax and nothing much you can do. The syntax is to be by hearted. Correct? Follow the syntax and then be happy. That is all about the select operation. And I guess बहुत ज्यादा select operation अगर आप लोगों ने एक दिन में पढ़ लिया, there are likely chances are that it will be overdose for you. तो हम लोग काम करते हैं, we will stop the select work over here, DQL operation over here, and I want you to go back to your update operation, delete operation, insert operation and so on. जो हमारे DML operations थे, so I want to continue onto the DML operations. वैसे टू बी फ्रैंक, डीएमएल ऑपरेशन में पढ़ने लायक कुछ नया बचा नहीं है, क्योंकि देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ डीएमएल ऑपरेशंस. वन इज इंसर्ट, और इंसर्ट के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिए. लाइक अपडेट, अपडेट के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिए. और डिलीट, डिलीट के भी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिए. तो सर वापस से पीछे जाके हम लोग क्या करेंगे? आई गेस उस दिन पे हम लोग कुछ तो बात कर रहे थे रिगार्डिंग समथिंग कॉल्ड एज अ रोल बैक. A lot of people were asking me, sir ये roll back क्या होता है? And I told them, हर एक चीज का टाइम आता है, so please have some patience. Let us go through step by step. So अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? Have a look at this. We started our lecture. It's time to recap quickly. We started our lectures understanding what is database. वैसे उससे पहले मैंने आपको ये बताया था how to do the installation, वो बात अलग है. Forget about that. What is database? What is RDBMS? What is MySQL? Correct? That we talked about. After that, I just tried to explain you how quickly we can create like a simple user, so that उस यूजर के लॉगिन से हम लोग सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं. सो उसके हम लोगों ने कुछ बेसिक्स तब देखे थे. उसके बाद में वी वेंट इनटू समथिंग कॉल्ड एज अ क्रिएट टेबल. और क्रिएट टेबल से पहले हमने कुछ डेटा टाइप्स देखे थे. सो वी हैव टेकन अ बिट ओवरव्यू ऑफ द डेटा टाइप्स and then we went on a create table. We seen how we can create the table. Okay, that is good. Now once your table is created,
once your table is created, after that we discuss टेबल क्रिएट करने के बाद में फिर हमने देखा उस टेबल के अंदर हम लोग रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं एंड आई टोल्ड यू ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हाउ टू इंसर्ट वन रो how to insert multiple rows, how to insert with null values, how to take from one table and insert into another table. Yes, we talked about that. We talked about some basic select operation, how we can run like select star from table name, how we can do that. And after that we went ahead and discussed bit more details about select operation जहां पर computed column हम लोग ने पढ़े how computed column goes on, correct. Then we went further, we talk about order by कैसे करेंगे, we talk about limit कैसे करेंगे. After that we talk about वेयर क्लॉज कैसे लगाना है और वेयर क्लॉज के अंदर देयर वर सो मेनी ऑपरेटर्स वेयर देयर लाइक इन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर, नॉट इन, नॉट बिटवीन, नॉट लाइक, एंडिंग, ऑरिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ. यस, रिलेशनल ऑपरेटर्स वेर आल्सो देयर. हम लोग ने वो सारे ऑपरेटर्स देखे so that we understand that how we can retrieve the records. But after that we said that सिर्फ इतना काफी नहीं है. Obviously we want to see something beyond that, something beyond that. तो अगर आपको कोई और सीरियस ऑपरेशंस करने हैं, now you need to have something called SQL functions for you. So SQL functions, फिर हम लोगों ने कुछ बेसिक स्ट्रिंग के फंक्शंस देखे, हमने डेट टाइम के फंक्शंस देखे, हमने न्यूमेरिक फंक्शंस देखे, हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन फंक्शन देखे, हम लोगों ने कुछ वो मिसलेनियस फंक्शन देखे लाइक null related functions और greatest smallest greatest and least kind of functions. तो हम लोगों ने if else kind of एक function देखा था. So हम लोगों ने ये सारे functions देखे and after that we also talk about another special type of function called as a group function. So we said that earlier के सारे functions हमारे क्या थे, kind of single row functions थे. Group function are typically, I said multi row function, but we said that the group function also has got some of the limitations and some of the limitations group function is not designed for that क्योंकि मल्टीपल रोज के ऊपर काम करना है तो उसके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं. बट ग्रुप फंक्शन प्रैक्टिकली कहां पर यूज किए जाते हैं, ग्रुप फंक्शन प्रैक्टिकली हम लोग हमारे जितने सारे रोज हैं उसको हम लोग किसी ना किसी ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं और उन ग्रुप्स के ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं लाइक ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर एंड गेटिंग अ सम ऑफ सैलरी, ग्रुप बाय जॉब गेटिंग एवरेज सैलरी, ग्रुप बाय समथिंग एंड देन टेकिंग अ काउंट. ऐसे करके हम लोग कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं. सो वी हैव इवन टॉक्ड अबाउट दैट और यही अभी हम लोग देख रहे थे. एंड फाइनली जस्ट नाउ आई वाज टेलिंग यू दैट ग्रुप बाय के साथ आप लोग वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय के साथ आप लोग हैविंग क्लॉज, ग्रुप बाय के साथ आप लोग ऑर्डर बाय, लिमिट, ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलाउड है. राइट नाउ विद दिस अब हमको बहुत सारी चीजें सिलेक्ट के बारे में पता चली. बट देयर वाज वन क्वेश्चन एंड पीपल वेर आस्किंग मी अगेन एंड अगेन, सर वो अगर हमने गलती से डिलीट कर दिया तो हमें सर वो वापस लाना, इज इट पॉसिबल? एंड आई सेड बाय डिफॉल्ट नॉट पॉसिबल. हमने गलती से कुछ तो अपडेट कर दिया और एक बार हमने क्वेरी फायर कर दी, गलती से क्वेरी फायर कर दी, सब मेरे को उसको वापस लाना है. Is it possible? Again, I said that sorry, by default it is not possible. But now it's time I want to talk about how I can make it possible. How I can make it possible. And there comes a new topic, something called as a transactions. Something called as a transactions. Sir, is it simple topic? वैसे पूरा डेटाबेस मॉड्यूल ही सिंपल है. ओनली थिंग इज दैट यू शुड बी पेइंग अटेंशन. एज यू आर पेइंग अटेंशन यू विल रियलाइज दैट डेटाबेस के मॉड्यूल में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. Since it is the first module you might find it something difficult, but as you learn your other modules of a course you realize that नहीं नहीं ये मॉड्यूल काफी सिंपल था. And it is, no doubt on that. So what is basically the transaction? What is basically the transaction? I will not tell you what is basically the transaction. I will give you some sort of an example. And now listen the example very carefully. The example is that we have got some of the banking scenario, like a banking scenario. And a banking scenario, I have got a table called the accounts table. So what is in an accounts table? Accounts table, I have got account ID. I'm having accounts type, saving account, current account, or whatever. I'm having some sort of a balance, and I'm having some sort of a balance. So it is there. Done. और भी कुछ कॉलम होंगे लेकिन अभी के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. Now what I'm saying is that, not what I'm saying that I want to transfer some amount from account number one to account number two. Account number one to account number two. So let's say that I want to transfer 5,000 rupees from account number one to account number two. अगर 5,000 rupees आपको ट्रांसफर करने हैं, what is the problem? 5,000 रुपीज अगर आपको ट्रांसफर करने, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो आपको पहले अकाउंट के 5,000 रुपीज कम करने पड़ेंगे
और दूसरे अकाउंट के 5,000 रुपीज बढ़ाने पड़ेंगे। आई होप यू आर रीडिंग दैट। पहले अकाउंट के 5,000 रुपीज कम करने पड़ेंगे और दूसरे अकाउंट के 5,000 रुपीज बढ़ाने पड़ेंगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। एम आई करेक्ट? 5,000 रुपीज आपको अकाउंट 1 टू अकाउंट 2 ट्रांसफर करने हैं, मतलब पहले अकाउंट में से 5,000 माइनस करो, दूसरे अकाउंट के अंदर 5,000 प्लस करो। प्लीज नोट, एट ए सिंगल क्वेरी ये दोनों करना पॉसिबल नहीं है। एक क्वेरी में ये दोनों करना पॉसिबल नहीं है, तो मेरे को दो क्वेरीज लिखने पड़ेंगे। समथिंग लाइक दिस, आई एम सेइंग अपडेट accounts accounts set set balance is equal to balance minus 5,000, a balance minus 5,000, where you say account id is equal to 1, account id is equal to 1, and the second one I'm saying that the balance is equal to balance plus 5,000, where account id is equal to 2. मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था? ट्रांसफर ट्रांसफर रुपीज 5,000 फ्रॉम from account 1 to account 2. This was my simple requirement. अब मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग क्लाइंट सर्वर ऑपरेशंस में तो क्लाइंट की तरफ से दो क्वेरी सर्वर के ऊपर फायर किए गए। क्लाइंट के ऊपर से दो क्वेरी सर्वर के ऊपर फायर किए गए। देयर आर लाइकली चांसेस दैट योर फर्स्ट क्वेरी सक्सेसफुल एंड योर सेकंड क्वेरी इज फेल्ड। there are likely chances that your first query is successful, but your second query is failed. Now the question is, how exactly it will work? Now in this particular case, first query is successful, the amount is deducted from the account 1. However, the second query is not successful, so amount is not added into the account 2. And now there is a problem. The first account holder is saying that मेरे account से तो चले गए, the second one is saying that मेरे account में तो नहीं आए। अगर आपको इस प्रॉब्लम का ग्रेविटी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज विजुअलाइज दैट ये जो अकाउंट नंबर 1 है वो आपके डैड का अकाउंट है, ये अकाउंट नंबर 2 जो है वो आपका अकाउंट है, और ये आपका पॉकेट मनी। now you see that your dad is saying that it is gone from my account, and then somewhere you are saying that sorry, it is not coming in my account. अब आपकी वाट लग गई। आई होप यू रियलाइज द प्रॉब्लम। और ये पॉसिबिलिटीज है क्योंकि हम लोग क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में है। क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में देर आर ऑलवेज चांसेस कि एट एनी मोमेंट द नेटवर्क में फेल, machine may fail, and this is something, a scenario which we want to handle. And these scenarios can be handled by using something called as the transactions. Now you ask the question, what is transaction? What is transaction? So transaction, have a look at this. Transaction transaction is set of DML queries or DML operations. It is a set of DML operations executed as a single unit, as executed as a single unit. Now what I'm saying is that if, what do you mean by single unit? If any query or any operation from the set of operations, from the set failed fails, the other operations, the other अरे रुको जरा, the other operations will be discarded. Other operations will be discarded. So what I'm saying is that अगर एक अकाउंट में से पैसे गए लेकिन दूसरे अकाउंट में अभी तक नहीं आए, yes, it is serious problem, I know that it is a serious problem, but nothing to worry about it. Even though if the second one is failed, the first one will be automatically discarded, and this concept is called as a transaction. So what is transaction? What is a transaction? I'm simply saying that the transaction is set of DML operations which is executed as a single unit, and this is something I have written on a slide for you as well, so don't worry. And something similar example I have given there. So transaction is a set of DML queries executed as a single unit. And transaction examples, one of the example which I was giving at the moment was accounts table, and that is in front of you, correct? इसके अलावा तो सर ये सिर्फ बैंकिंग में यूज होता है क्या? नॉट रियली, आई एम गिविंग यू सम अदर एग्जांपल। जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड द ऑर्डर्स
एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड पेमेंट. अगर हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऑनलाइन शॉपिंग के लोगों के पास ऑर्डर्स का कोई ना कोई तो टेबल होगा. ऑर्डर्स का कोई ना कोई तो टेबल होगा जिसके अंदर हम लोग हमारी ऑर्डर इंसर्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग हमारी ऑर्डर इंसर्ट करने वाले हैं. लेकिन मैंने सिर्फ ऑर्डर इंसर्ट की, लेकिन पेमेंट का इंसर्शन फेल हो गया. नाउ टेल मी, इट इज वेरी सिंपल. ऑर्डर इंसर्ट कर ली, लेकिन पेमेंट का अगर इंसर्शन फेल हो गया, व्हाट इज पॉइंट इन टेकिंग दैट ऑर्डर? Correct? So what I want is that I want to even cancel the order, I want to even cancel the payment, and I want to tell the user, why don't you try it once again? There is some problem occurred at our side, so we will not allow, neither we will take your order nor we are taking your money, so you again give a order and again pay the money. I hope I was just trying to give you example. The second example which I mean by the transaction. सो ट्रांजैक्शन का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, अकाउंट से फर्स्ट अकाउंट टू सेकंड अकाउंट ट्रांसफर. सेकंड एग्जांपल मैंने आपको दिया कि यू आर पुटिंग ऑर्डर, ऑर्डर इन अ इंसर्ट, यू आर इंसर्टिंग अ ऑर्डर एंड यू आर इंसर्टिंग अ पेमेंट. अगर दोनों सक्सेसफुल होते हैं देन देयर इज पॉइंटिंग इन डूइंग दैट. अगर इसमें से एक भी फेल हो जाता है, देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट इन वर्किंग ऑन दैट. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. करेक्ट? टिपिकली टिपिकली जब हम लोग ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, सो थियोरेटिकली वी से दैट ट्रांजैक्शन के चार प्रॉपर्टीज है. मैं फिर से बता रहा हूं, हमारा कोर्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है, सो आई रियली डू नॉट वांट टू स्पेंड योर लॉन्ग टाइम ऑन टू दैट. जिन लोगों ने अपने इंजीनियरिंग के वक्त आरडीपी में पढ़ा होगा, आई एम वेरी श्योर वन एंटायर यूनिट वाज देयर which was dedicated on a transaction. So what is transaction, how transaction internally does, how it does locking, how it avoid deadlock, and etc etc. The hell lot of theory आप लोगों ने पढ़ लिया है. I know that you are expert into that, but now it's time that we want to talk about practically. But just to take a quick look at some of the basic concepts, what is we are saying that transaction has got acid property. Acid stands for atomic, acid stands for consistent, C for consistent, I for isolated, and last one is durable. What is the meaning of that in each line? What is atomic? What is atomic? Atomic simply means that it is executed as a single unit, executed as a single unit. अगर आपको केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री हम लोग कहते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट element, smallest part of any element. Atom is the smallest part of any element which, what is that? Which preserve the property of element. Atom is the smallest part. It cannot be broken further so that the properties are still retained. So what I'm saying is that atom, in as per chemistry, I'm saying that as per chemistry, atom is the smallest unit which preserve the property of element, and you cannot obviously break it further. Something similar, I'm saying that transaction इज एटोमिक. एटोमिक इन द सेंस, अगर उसके अंदर ट्रांजैक्शन में आप लोग चार क्वेरीज लिख रहे हो, तो ऑल फोर क्वेरीज दे आर एग्जीक्यूटेड एज अ सिंगल यूनिट. इट विल नेवर हैपन दैट ये चार में से दो सक्सेसफुल हो गए और दो फेल्ड हो गए. दिस विल नेवर हैपन. अगर सक्सेसफुल हुए तो ऑल फोर विल बी सक्सेसफुल, और अगर फेल हुए, डिस्कार्ड हुए, देन ऑल फोर विल बी डिस्कार्डेड. ऑल फोर विल बी डिस्कार्डेड. दिस कंसेप्ट वी कॉल इट द एटोमिसिटी. The second one, we are talking about consistency. So what is there in a consistency? What is in consistency? जब आप लोग ट्रांजैक्शन खत्म करते हो, as I said that it's like a client server architecture. As you are saying that it's a client server architecture, this is my server, दिस माय सर्वर. अगर आप लोग बैंकिंग का ही एग्जांपल ले रहे हो, अगर आप लोग बैंकिंग का ही एग्जांपल ले रहे हो, यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट इन बैंकिंग द सेम अकाउंट कैन बी एक्सेस फ्रॉम द मल्टीपल प्लेसेस. Like same account can be accessed in ATM, same account can be accessed from a clerk in one branch, and then same account can be accessed from, let's say, multiple different branches as well. So what I'm saying is that there can be multiple clients, there can be multiple clients trying to access your account from the multiple places. There can be multiple clients accessing the same data from the multiple places. Second, third, these are all clients, and these clients are trying to access the account over here. What I'm saying is that if one user is doing some operations, is one user is doing some operation, I'm saying that obviously within a transaction, moment transaction is completed, the moment the transaction is completed, immediately the same changes should be visible to all the user. What I'm saying is that अगर आप लोग बैंक में जा रहे हो और बैंक में जाके
अगर आप लोग पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, जिस मोमेंट आपका डिपॉजिट हो गया, उस मोमेंट उस बैंक के अंदर वहां पर जो क्लार्क बैठा है उसको तो दिखना ही चाहिए। बट अगर आप लोग उसको एटीएम कार्ड से अगर उसको एक्सेस कर रहे हो, ऑन द सेम मोमेंट यू शुड बी एबल टू सी द सेम अमाउंट। अगर वही चीज अगर आप लोग के पास मोबाइल बैंकिंग है, अगर आप लोग मोबाइल के ऊपर से देख रहे हो, ऑन द सेम मोमेंट यू शुड बी एबल टू सी द सेम थिंग। तो यहाँ पर हमारे पास तीन तीन चार चार अलग अलग क्लाइंट है, एक बैंक में बैठा हुआ, एक मोबाइल बैंकिंग, एक आपके पास एटीएम में जो है वो। सो ये सब लोग अगर एक ही अकाउंट के दिख रहे हैं, सो मोमेंट ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, all of them should be able to see the same data. This is called as a consistency. This is called as a consistency. I'm going ahead talking about the third thing. It is isolation. What is isolation? Isolation का मतलब है कि एक सर्वर के ऊपर multiple users can do multiple transactions concurrently. What I'm saying is that एक सर्वर के ऊपर multiple users can do multiple transactions concurrently. So what I'm saying is that यहाँ पर मल्टीपल लोग मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ कर सकते हैं, एंड एट दैट टाइम देर इज नो प्रॉब्लम, मल्टीपल यूजर्स कैन डील विद। रादर आपके ट्रेडिशनल डेटाबेसेस में ये सबसे बड़ा लिमिटेशन था। व्हाट इज लिमिटेशन एट योर ट्रेडिशनल डेटाबेसेस? यू कैन नॉट डील विद you cannot deal with multiple user at the same time. I was saying that traditional databases are like single user database. multiple लोग एक ही एक्सेल फाइल को एक साथ मॉडिफाई नहीं कर सकते, दैट इज द लिमिटेशन। बट यहाँ पर ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट कैन कम्युनिकेट टू योर डेटाबेस एट द सेम टाइम। जब हम लोग अमेजोन के ऊपर जाते हैं और अमेजोन का जब हम लोग कैटलॉग देखते हैं, ऑर्डर्स देखते हैं, ऑर्डर्स सॉरी प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर मेकिंग रिक्वेस्ट to the Amazon database, and you are able to see the same data. So hundreds of people, thousands of people at the same time, they are able to see it simultaneously. Correct? So I'm saying the isolation. So हर एक चीज अलग 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 एग्जीक्यूट हो रही है, there is no problem. Correct? जयदीप, you can hold on your question. अभी टाइम है कि इसको हम लोग कहते हैं कंकरेंसी, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। फिलहाल तो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। शायद आपके प्रॉब्लम का आंसर मैं आज नहीं दे पाऊंगा, लेट्स सी इफ इट इज नॉट कंप्लीटेड, हम लोग मंडे को उसका आंसर देखेंगे। बट डोंट वरी, बट आएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन अच्छा था सर, अगर मान लो अगर दो तीन जगह से अगर हम लोग एक ही डेटाबेस एक ही अकाउंट के ऊपर एक्सेस करेंगे तो क्या होगा? मैंने कहा कुछ तो होगा। डेटाबेस डू सम हैंडलिंग फॉर दैट। अगर एक लाइन में आंसर चाहिए, डेटाबेस डू समथिंग कॉल्ड एज अ रो लॉकिंग और लाइक अ टेबल लॉकिंग। रो लॉकिंग टेबल लॉकिंग क्या है मैं आपको बता रहा था। ओके, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। व्हाट इज आइसोलेशन? आइसोलेशन सिंपली मींस दैट मल्टीपल यूजर्स कैन डू, लिसन केयरफुली, multiple users can do multiple transactions on the same database at the same moment, and they will execute as if they are running independently. I'm repeating once again. Multiple users can do multiple transactions on the same database server, and it will work well as if they are executing independently. So this is something that I'm trying to tell you, and it is written multiple transactions by the same client or like multiple client are processed concurrently. It is allowed. That is written. Is that okay? Manish, Sarthak? All right. Going ahead, and last one is durable. What is durable? जैसे आपका ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, जैसे ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद में जो कुछ भी आपके डेटाबेस का स्टेट है, जो कुछ भी फाइनल चेंजेस है, all those final changes are saved into the database hard disk. All the saved changes are saved in RDBMS hard disk. That is for sure. That is for sure. There is no problem. आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि एवरीवन इज वर्किंग आइसोलेटेड। एवरीवन इज वर्किंग आइसोलेटेड। जब आप लोग किसी कंपनी में काम करते हो, कंपनी में आप अकेले काम नहीं करते हो, हम लोग मल्टीपल लोग कंपनी में काम करते हैं एज ए एम्प्लॉय, और हर एक जन उसी कंपनी में काम करता है, और हर एक जन अपना अपना काम करता है, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। सो वी आर डेफिनेटली, इवन दो वी आर वर्किंग इन द सेम कंपनी, we are individually doing our own jobs. We are doing our own jobs. We are doing our jobs independently. That is the meaning of isolation. I hope Amit it is clear, right?
सो दैट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन, नथिंग ग्रेट। सो लेकिन सब लोग, मल्टीपल लोग कॉन्करेंटली उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ये मुझको आपको कहना है। तो सर लेकिन ये जो आपने ट्रांजैक्शन कहा है, सर आप बता रहे हो कि दिस सेट ऑफ क्वेरीज एग्जीक्यूटेड एज सिंगल यूनिट एंड यू आर सेइंग दैट इज लाइक अ ट्रांजैक्शन। तो सर ये ट्रांजैक्शन हमको देखने को कैसे मिलेगा, हम लोग इसको करके कैसे देख सकते हैं? यस, दैट इज व्हाट मोर प्रैक्टिकल वन एंड वी वांट टू टॉक अबाउट। एंड देयर आर सर्टेन क्वेरीज, there are certain queries, and the major basic queries I want to talk about is that start transaction. A basic query that I want to talk about is that start transaction management queries. So first one, start transaction. After that you give the queries, आपको जितने queries देने उतने दे दो, DML1, DML2, DML3, आपको जितने queries देने उतने queries दे दो। once you are confirm कि आपको जो जो changes करने थे वो सारे changes आपने कर लिए, go ahead and simply say commit it, simply say commit it। or other way around, you start the transaction, you start the transaction, you start working, let's say DML1, DML2, DML3, आप लोगों ने ऑपरेशन किए, and then suddenly you realize, oh whatever operations I have done like a wrong operation। अब मैं क्या करूं? कुछ मत करो, go back and simply say that rollback। what rollback does? Rollback simply discard the operations। so I'm saying that this is where I say that this is as good as, final save, like a final save, and this is as good as like a discard operation। this is something like a discard operation। जो जो चीजें अपने ऊपर किए वो सारी की सारी चीजें एक साथ डिस्कार्ड हो जाएगी। सर नहीं समझा, नहीं समझा, समझने वाली बात नहीं है, करके देखने वाली बात है। why don't we go ahead and try to do that? We are talking about transaction, we are talking about transaction, let us take a look at this। okay, let's take a look at this। मैं कहाँ पर था? मैं ट्रांजैक्शन में था, मैं ट्रांजैक्शन में हूँ, and I'm going ahead, I'm saying that if the same thing I want to do it using transaction, मैं एक काम करता हूँ, I'll take up the same example, I'll take up the same example, बैंकिंग वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, बट यूजिंग ट्रांजैक्शन मैं ये एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ। पहले बेसिक बेसिक पढ़ लो यार राजेंद्र, एक मेरे को पहले उस लेवल पे लेके जाने दो जिन लोगों को अभी तक कुछ नहीं आता है, उनको पहले मैं बेसिक बेसिक पढ़ा दूं, उसके बाद में हम लोग एडवांस ऑपरेशन ले लेंगे। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, पहले मेरे को बेसिक तो करके दिखाने दो। डोंट जंप प्लीज। हम लोग आगे बढ़ रहे थे, एंड आई एम सेइंग दैट क्रिएट 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 टेबल अकाउंट्स, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वही असाइनमेंट जो ऊपर हम लोगों ने लिया था। सो आई एम सेइंग दैट इट लाइक अकाउंट आईडी is integer, type I can say it's a var, okay, let it be, and I'm saying that amount or let's say balance I'm saying there's a double decimal, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। I guess इतना balance आपके लिए काफी है, that is more than sufficient। yes, and then I'm saying that insert into accounts values, अकाउंट नंबर 1, लेट्स से दैट इस अकाउंट के अंदर 50,000 रुपीज है, एंड देन यू हैव गॉट लाइक नहीं पहले लेट्स से दिस इज सेविंग अकाउंट, ऑल राइट, सेविंग अकाउंट 50,000 रुपीज है, अच्छी बात है। दिस इज सेकेंड अकाउंट, ये आपका अकाउंट है, इसके अंदर 500 रुपीज है, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। सो फार मेरा डेटाबेस कुछ इस तरह से है और वो रेडी है, डेटाबेस इस तरह से वो रेडी है। एक बार चेक करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स, एंड व्हाट आई एम गेटिंग टू थिंग्स, ओके दैट इज गुड। अब मैं इसके बाद में मुझको ऑपरेशन करना है, बट आई एम सेइंग दैट एट एनी मोमेंट मुझको इसको वापस से डिस्कार्ड करने की फैसिलिटी चाहिए। अगर आपको डिस्कार्ड करने की फैसिलिटी चाहिए, हैव अ लुक एट दिस, यू बिगिन विद द ट्रांजैक्शन। बाय डिफॉल्ट हम लोग ट्रांजैक्शन यूज नहीं कर रहे थे इन माई सिक्वल, लेट मी गो अहेड, let me start the transaction। as I'm starting a transaction, listen carefully, as I'm starting a transaction, now the operation begin, operation begin, and let's go ahead, starting the transaction। after starting a transaction, I'm just checking that what is updated, ये पहले अकाउंट का बैलेंस माइनस कर दिया, ये पहले अकाउंट का बैलेंस माइनस हो गया क्या, मैं चेक करता हूँ ये पहले अकाउंट का बैलेंस माइनस हुआ क्या। आई फाइंड दैट वो पहले अकाउंट का बैलेंस जो 50,000 था, 50,000 था,
नाउ 45,000 हो गया, वेरी गुड। आई एम जस्ट गोइंग अहेड, अभी तक दूसरा क्वेरी नहीं दिया है, सो लेट मी जस्ट गो अहेड, लेट मी गिव द सेकंड क्वेरी, लेट मी गिव द सेकंड क्वेरी। मैंने सेकंड क्वेरी भी दे दिया। अब सेकंड क्वेरी में मैंने 5,000 प्लस कर दिए, तो ऑलरेडी 500 था, ये 500 ए सीट अर्लियर इट इज 500, इसके अंदर 5,000 ऐड हो गए, नाउ इट बिकम 5,500। ये जो मुझको काम करना था, ये काम सही हुआ क्या? यस, बिल्कुल सही हुआ। एंड देन इफ आई एम सेइंग दैट, व्हाई डोंट आई से कमिट वर्क, कमिट वर्क। नाउ मोमेंट मेरा काम पूरा हो गया, मैं कह रहा हूं कमिट। नाउ कमिट मींस दैट द चेंजेस आर सेव्ड परमानेंटली, the changes are saved permanently and you see the result. Wow, that is fantastic, that is fantastic. बट रुको जरा, मुझको सेकंड ऑपरेशन करना है, फिर से एक बार ट्राई करता हूं। लेट मी बिगिन विद द न्यू ट्रांजैक्शन, पहले देखो बाद में करना, करके देखने में कोई टाइम नहीं लगने वाला है, सो प्लीज पे अटेंशन, please pay attention. I'm saying that start the transaction once again. I'm starting a transaction once again. Don't miss any step in between. Please pay attention. See that well. Currently, 45,000 and 5,500 is, let's say, current one. No problem. And then again, I'm saying that I want to do the update operation. I'm doing update operation and I'm saying that again 2,000. I'm sending operation, let's say 2,000. ये 2,000 रुपीज आपने माइनस कर दिए, ये कितने थे? पहले 45,000 थे, सो माइनस करके कितने हुए? कितने हुए? Obviously like a 43,000. I see, oh there is a 43,000, so there is no problem. I see the difference. Let us go ahead. दूसरा जो अकाउंट था, ये उसके अंदर ये 2,000 रुपीज ऐड कर देते हैं, ये दूसरे के अंदर 2,000 रुपीज ऐड कर देते हैं। इज इट एडेड? लेट मी चेक इट, इज इट रियली एडेड? ये वहां पर अभी 5,500 पहले था, नाउ 2,000 इज एडेड, नाउ इट बिकम 7,500। ओ दैट इज ग्रेट, वो 7,500 भी ऐड हो गया, ओ दैट इज गुड, things are going ahead. Now listen carefully, listen carefully. After doing the transaction, I realized that यार ये मेरे को ऑपरेशन नहीं करना था, ये ऑपरेशन मैंने कर तो दे दिया। हैव लुक एट दिस, इनिशियली 45,000 था, मैंने ये माइनस कर दिया यहाँ से, मैंने यहाँ पर प्लस भी कर दिया, एंड देन सडनली आई रियलाइज दैट यार नहीं करना था इसको, अभी तो मैंने 5,000 रुपए देते, मैं वापस इसको 2,000 रुपए क्यों दूं? नहीं, मेरे को नहीं करना ये ऑपरेशन, आई डोंट वांट दैट, यू डोंट वांट दैट। सो वॉट एवर वर्क दैट you have done, you want to roll back that work, go ahead and you can simply say roll back work. And moment you say roll back work, have a look at this, moment you send roll back work, earlier जो चेंजेस हो चुके थे, अर्लियर जो चेंजेस हो चुके थे, दोज चेंजेस आर नाउ डिस्कार्डेड, ये दो चेंजेस आर नाउ डिस्कार्डेड। ये पहले वापस से एक बार ओरिजिनल 45,000 पे आ गया, ये वापस से 5,500 के ऊपर आ गया, एंड यू सी द रिजल्ट। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पर मुझको बैलेंस कितना मिल रहा है? फर्स्ट अकाउंट का बैलेंस मुझको मिल रहा है 50,000, सेकंड अकाउंट का बैलेंस, सेकंड अकाउंट का बैलेंस मुझको मिल रहा है 500। जब आप लोग खुद से करके देखोगे तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करके देख सकते हो, नो डाउट। ऑब्वियसली आफ्टर डूइंग अपडेट, आफ्टर डूइंग अपडेट, अपने पहले वाले में से, रुको जरा, दिस इज ओरिजिनल, हाँ यहाँ पर ये पहले सिलेक्ट के बाद में व्हाट यू गेट देयर, यू गेट देयर 5,000 इज माइनस, ए 5,000 माइनस, सो इट बिकम 45,000, वेरी गुड। और दूसरे के प्लस के बाद में नाउ इट बिकम 5,500, इट बिकम 5,500। obviously when you are done commit, obviously when you are done commit, you get the final 45,000 and 5,500 changes are saved permanently into the database. Transaction is completed, a transaction is completed। let me just go ahead, let me go ahead, I'm trying it once again। अब ओरिजिनल है 45,500, अगर आप लोग पहले में से माइनस कर रहे हो, इट बिकम्स 43,000, ये आपने माइनस कर दिया, उसके बाद में आपने चेक किया, यस इट इज 43,000। हाउएवर दूसरा वाला ऑफिस से आप लोग चेक कर रहे हो, एंड देन यू रियलाइज दैट इसके अंदर प्लस भी हो गया, सो इट बिकम लेट्स से 7,500, ये भी हो भी गया। बट आफ्टर मोमेंट आई हैव डन रोल बैक, मोमेंट आई हैव डन रोल बैक, आई रियल रोल बैक का मतलब है जो दो चेंजेस मैंने यहाँ पर किए हैं, ये जो दोनों चेंजेस मैंने यहाँ पर किए हुए हैं, दो चेंजेस आई वांट टू डिस्कार्ड। मतलब क्या? जो ओरिजिनल उसका स्टेट था, दैट ओरिजिनल स्टेट आई वांट टू रिटर्न बैक, और ये मैंने आपको वापस से करके दिखाया है कि वापस से यू आर गोइंग बैक टू द ओरिजिनल चेंजेस। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आप लोग इसको करके देखना चाहोगे? प्लीज गो अहेड, डू इट स्टेप बाय स्टेप,
एंड कंफर्म दिस फर्स्ट, और फिर मैं आपको बताता हूं कि पहले कमिट किया बाद में रोल बैक किया, क्या किया, उसका मतलब क्या होता है। पहले बेसिक जो आपको समझ में आ रहा है पहले उसको करके देखो। मैं फिर से बता रहा हूं, जो मैंने पहले आपको बताया पहले चुपचाप से उतना पहले करके देखो, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और उसके बाद में अगले क्वेश्चन पूछना। आई रिपीट वंस अगेन, जो मैंने करके दिखाया है पहले उसको रन करके देखो, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, पहले क्या होता है, पहले जो पढ़ा गया वो समझो, और उसके बाद में अगले क्वेश्चन पूछो, सर मैंने ऐसे किया तो क्या होगा, मैंने वैसे किया तो क्या होगा, वैसे किया तो क्या होगा, उसके यहाँ जवाब आने वाले। वेट फॉर सम टाइम। राजेंद्र, जब हम लोग कमिट करते हैं या रोल बैक करते हैं, लिसन केयरफुली, कमिट एंड रोल बैक आर नॉट डीएमएल क्वेरीज। कमिट एंड रोल बैक आर नॉट डीएमएल क्वेरीज। सो जब भी हम लोग कमिट करते हैं रोल बैक करते हैं, नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड वो आपको कभी नहीं दिखाता, इट विल ऑलवेज शो इट जीरो। ये आपको ऑलवेज जीरो। एंड मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लीज अपनी अकल मत लगाना, प्लीज फॉलो द स्टेप्स। सर मैंने स्टार्ट ट्रांजेक्शन किया ही नहीं और अगर मैं रोल बैक कर रहा हूं, होगा क्या, नहीं वर्क होगा। प्लीज डोंट मिस एनी स्टेप एंड डोंट डू नॉनसेंस, राइट। डोंट मिस एनी स्टेप, डू इट स्टेप बाय स्टेप। अगर गलती हो गई है तो टेबल ड्रॉप करो और फिर से एक बार सारे स्टेप्स वन बाय वन करो। शुभम, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर आपसे गलती हुई है, देन यू शुड बी गोइंग बैक, ड्रॉप द टेबल एंड ट्राई इट वंस अगेन। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि सर वो ट्रांजैक्शन रोलबैक वर्क नहीं हो रहा है। रोलबैक नहीं वर्क हो रहा है इसका मतलब एक ही है, आपने स्टार्ट ट्रांजैक्शन करना भूल गए। इस पूरे क्वेरी में मैंने 2 बार स्टार्ट ट्रांजैक्शन किया था, सो यहां पर मेरे पास 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन है। प्लीज मिस्टेक्स मत करो, मैंने जो दिखाया है पहले उतना ही आरएनडी करो और उतना ही पहले चेक करो। अननेसेसरी अगर मिस्टेक हो गया है, सब कुछ ड्रॉप करो और फिर से एक बार सारे क्वेरी स्टेप बाय स्टेप दे दो। जो आपने गलती की है, गलती समझने की कोशिश अभी मत करो। पहले जो सही है पहले वो समझने की कोशिश करो, बाद में गलत समझने की कोशिश आएगा, वो भी समझ में आ जाएगा। गिव मी सम टाइम, राइट। और एक चीज, इसमें जो वर्क नाम का कीवर्ड मैंने आपको दिखाया, द वर्क इज ऑप्शनल एनसी कीवर्ड। जस्ट टू मेंशन अ पॉइंट देयर, यहां पर मैंने अभी आपको 3 कमांड्स बताए। एक कमांड था स्टार्ट ट्रांजैक्शन, दूसरा कमांड था कमिट वर्क, a commit work, where I say that in this particular case, work is optional, optional NC keyword। तो आपको वर्क कीवर्ड लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, चॉइस इज yours। And the next one is, I also told you about rollback. Rollback work, something again similar, again similar, work is again optional ANSI standard keyword, again ANSI standard keyword। चलो गुड, so majority of people have done this। ओके, एंड नाउ लिसन। अब मैं कुछ आपको ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ और बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को बहुत आगे वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ उसको ठीक से सुनो और बहुत सारे आंसर्स आ जाएंगे। यस, आई एम वेटिंग लिटिल मोर। गो अहेड, वी शैल कंप्लीट इट। आई एम वेटिंग। गो देयर, डू स्टेप बाय स्टेप, चेक इट, नो प्रॉब्लम।
Okay, now I guess we can move on. तो मैं कुछ बता रहा हूं, मैं करके नहीं दिखा रहा हूं अभी आगे। जो मैंने बताया, जो कुछ भी आपने किया है उसका मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट स्टार्ट ट्रांजैक्शन मींस। व्हाट स्टार्ट ट्रांजैक्शन मींस, स्टार्ट ट्रांजैक्शन मतलब मैं अभी यहां से आगे कुछ ना कुछ तो डीएमएल ऑपरेशंस करने जा रहा हूं। स्टार्ट का मतलब है कि मैं कुछ ना कुछ तो डीएमएल ऑपरेशंस करने जा रहा हूं। आई रिपीट वंस अगेन, मैं कुछ ना कुछ तो डीएमएल ऑपरेशन करने जा रहा हूं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट ट्रांजैक्शन। अगर आपने स्टार्ट ट्रांजैक्शन नहीं किया, लिसन केयरफुली, अगर आपने स्टार्ट ट्रांजैक्शन नहीं किया, इसका मतलब क्या है, आपने हर एक क्वेरी जो दी है वो फुल एंड फाइनल है, उसका कोई रोल बैक नहीं हो सकता और उसको कमिट करने की भी जरूरत नहीं है। आई रिपीट वंस अगेन, इफ इफ नो transaction is started, no transaction started, every query, every dml operation is by default auto committed, ऑटो कमिटेड, ऑटो सेव्ड, ऑटो फाइनलाइज। यहां पर कोई ऑपरेशन नहीं है। सो पीपल आर आस्किंग दैट सर वो मैंने स्टार्ट ट्रांजैक्शन करना भूल गया और अगर मैंने रोल बैक किया तो। अगर आप लोग स्टार्ट ट्रांजैक्शन भूल गए हो, इट ओनली मींस दैट आपने जितने ऑपरेशन ऊपर किए वो ऑलरेडी फुल एंड फाइनल हो चुके हैं। अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट वंस अगेन, स्टार्ट ट्रांजैक्शन, इफ नो ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड, every DML operation is by default auto committed, ऑटो कमिटेड, करेक्ट। सो अगर आपको आगे जाके रोल बैक करने के चांसेस चाहिए तो अपने ट्रांजैक्शन चालू करना मैंडेटरी है। अगर आपके यहाँ पर ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने ओरेकल पढ़ के आए हैं, जिन्होंने कुछ एमएस सिक्वल पढ़ के आया है, या जिन्होंने माई सिक्वल किसी कस्टमाइज एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कुछ और रहा होगा। आई नो दैट, बट इट डिपेंड्स ऑन अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर सिस्टम। अभी जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो अननेसेसरी, अगर आपने इससे पहले थोड़ा बहुत आरडीबीएमएस पढ़ लिया है और अगर आपको ये अलग टॉपिक लग रहा है तो इसको हो सके तो भूलने की कोशिश करना जो आपने पहले पढ़ा था वो। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, डू नॉट अननेसेसरी क्रॉस क्वेश्चन, एटलीस्ट इन अ क्लासरूम। वी कैन डिस्कस डेफिनेटली लेटर if you really want it. If no transaction is started, every DML operation is default auto committed. Now listen, once transaction is started, listen carefully, all changes, all dml operation all dml operation changes will be saved, will be saved in temporary tables, temporary tables on server, temporary tables on server, not in main table, not in main table. This is very important. Third thing, during, listen carefully, during transaction, during transaction, when select query is fired, when select query is executed, when select query is executed, the merge result, the merged result, merged in the sense, what is that? Original table plus changes, plus changes, the merged result is sent, is sent to that client. आई सेड टू दैट क्लाइंट, जिसने क्वेरी फायर की है, हम लोग यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज गोइंग टू वर्क लाइक दिस, राइट। एंड दैट इज द रीजन ड्यूरिंग कमिट, अगर आपको यहाँ पर चेंजेस दिख रहे थे, ड्यूरिंग कमिट मैंने अपडेट किया, सर आई एम एबल टू सी द चेंजेस, सर मैंने यहाँ पर अपडेट किया, आई एम एबल टू सी द चेंजेस। यहाँ पर आपको जो चेंजेस दिखाए जा रहे थे वो ओरिजिनल टेबल के चेंजेस प्लस टेम्पररी चेंजेस में जो, टेम्पररी टेबल में जो चेंजेस किए थे वो उसको कंबाइन करके वो डेटाबेस अपना बेसिक मैथमेटिक्स करता है और उसके बाद में आपको रिजल्ट दिखाए जा रहे थे। बट दोज चेंजेस वेर नॉट डन इन लाइक अ ओरिजिनल वन। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और एक चीज, सर ये टेम्पररी टेबल, ये टेम्पररी टेबल किसके लिए बनाया गया था? प्लीज अंडरस्टैंड दैट द टेम्पररी टेबल, the temporary table was internally created for each transaction, a created for each transaction. What is the meaning of this? It only means that
जो चेंजेस आप लोग कर रहे हो वो चेंजेस सिर्फ आपको दिखेंगे। जो चेंजेस आप लोग कर रहे हो वो चेंजेस सिर्फ आपको दिखेंगे, वो दूसरे यूजर्स को नहीं दिखेंगे। बाय द टाइम योर ट्रांजैक्शन इज अंडर प्रोग्रेस, बाय द टाइम योर ट्रांजैक्शन इज अंडर प्रोग्रेस, जो चेंजेस आप लोग कर रहे हो वो चेंजेस सिर्फ आपको दिखेंगे, वो चेंजेस दूसरे किसी को नहीं दिखेंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली यू मीन, मैं करके दिखाता हूं, एंड डोंट डू इट विद मी, जस्ट पे अटेंशन। अब जो बता रहा हूं आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है, शांति से देखो। सो हेयर यू गो, हेयर आई से select star from accounts, forget, select star from accounts. I am starting a transaction, don't forget starting a transaction. You simply say update accounts set, update account set. I'm saying that balance is equal to balance minus 100 rupees, where account id is equal to 1, and let it be. ये चेंजेस, ये मेरे चेंजेस सेव हुए क्या? चेंजेस सेव हुए हैं, लेकिन नॉट इन अ मेन टेबल, इन अ टेम्पररी टेबल। सो इसका क्या प्रूफ है कि ये मेन टेबल में नहीं हुए, टेम्पररी टेबल में हुए? वेट फॉर अ मिनट, लेट मी ओपन सम सेकेंड कमांड प्रॉम्प्ट, हैव अ लुक एट दिस। लेट मी ओपन अ सेकेंड कमांड प्रॉम्प्ट, लेट मी मेक अ सेकेंड लॉगिन, लेट मी मेक अ सेकंड लॉगिन। आप लोग ईडेक का लॉगिन कर सकते हो, आप लोग रूट का लॉगिन कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लॉगिन कौन से यूजर का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रिपीट वंस अगेन, लॉगिन कौन से यूजर से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज गोइंग टू बी अ सेपरेट क्लाइंट, दिस इज गोइंग टू बी अ सेपरेट क्लाइंट अल्टीमेटली। आप लोग बाद में इसको रूट से भी करके देखना, चॉइस इज यूअर्स। आई एम गोइंग इनसाइड दिस डैक डीबी, एंड इनसाइड दिस when I'm writing a query, select star from accounts. Here you see that अरे यार इसके 100 रुपीज कम हो गए, यहां पर दिख रहा है, फर्स्ट यूजर को दिख रहा है, बट सेकेंड यूजर को वो चेंजेस नहीं दिख रहे। ए सेकेंड यूजर को वो चेंजेस नहीं दिख रहे। क्यों? मैंने आपको क्या बताया, वो जो टेम्पररी टेबल क्रिएट हुआ था वो पर ट्रांजैक्शन था, पर यूजर पर ट्रांजैक्शन था। सो ये सारे चेंजेस इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के हैं, तो सिर्फ इसी के अंदर दिखाई देंगे। अब जब तक, लिसन केयरफुली, जब तक आप लोग कमिट या रोल बैक नहीं करते तब तक आपका ट्रांजैक्शन खत्म नहीं होता। अभी अंदर आप लोग एक अपडेट करो, 10 अपडेट करो, इंसर्ट करो, डिलीट करो, आपको चाहे जो करना है वो करो, your transaction get completed, your transaction get completed when you perform update, sorry, when you perform either commit or rollback, either commit or rollback. If I say rollback, if I say rollback, what will happen? The changes are discarded. If I say rollback, what will happen? Changes are discarded. तो ये जो माइनस हुआ है, ये माइनस वैसे भी आपको नहीं दिख रहा है। अगर आपको ही नहीं दिख रहा है तो दूसरे किसी को देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इट्स वेरी सिंपल। बट वेट, but wait, let us do it once again, let us do it once again. Again I am starting a new, again I'm, this is my original one. Again I am starting new transaction, again I'm starting new transaction, again I am doing some sort of update operation, and I'm saying that let me subtract, let's say 200 rupees. Let me see the changes. Oh yes, 200 rupees are deducted. See it carefully. At this moment, at this moment, the second client is not able to see the changes. ए सेकेंड क्लाइंट को अभी भी दिख रहा है वो 45,000 रुपीज ही दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दैट ट्रांजैक्शन इज अंडर प्रोग्रेस, दैट ट्रांजैक्शन इज अंडर प्रोग्रेस। चलो मैं आगे जाता हूं। अब मैं कहता हूं कि ये चेंजेस हो चुके हैं, कमिट देम। मोमेंट ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, मोमेंट ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, अब यहाँ पर कंप्लीट भी हो रहा है और कमिट हो रहा है, मतलब जो चेंजेस मैंने किए, दो चेंजेस आर फाइनलाइज इनटू द डेटाबेस, जो चेंजेस मैंने किए, दो चेंजेस आर फाइनलाइज इनटू द डेटाबेस। as they are finalized into the database, obviously this person see the changes, obviously the second person, the second client see the same changes. And this is what I was talking about, consistency. What is consistency? What is consistency? Moment transaction is completed, the same changes will be seen by all the clients, will be seen by all the clients. This is a simple concept that I was trying to explain. और इसलिए मैं आपको कह रहा था give me some time, मैं पहले आपको करके दिखाता हूं, and then let me explain you further. Another point over here, listen carefully, very important. A transaction is completed
when commit or rollback is done. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आइदर कमिट और रोल बैक, आप लोग चाहे जो भी करो, योर ट्रांजैक्शन इज ओवर. आप लोग कमिट करो, रोल बैक करो, चाहे जो भी करो, योर ट्रांजैक्शन इज ओवर. सो कमिट का मतलब क्या है? कमिट का मतलब क्या है? ऑल चेंजेस, ऑल चेंजेस recorded in the temporary table, in the temporary table of that transaction are permanently permanently saved, permanently saved into main table, into main table, into original table, obviously on a disk. डिस्क के अंदर तो सेव होने ही वाला है, लेकिन डिस्क के अंदर ओरिजिनल टेबल पे वो सेव होने वाला है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ऑब्वियसली ऑन डिस्क तो कॉमन सेंस है, वो तो है ही, लेकिन मैं ऑन डिस्क लिख के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता. आपके ओरिजिनल टेबल में वो सब कुछ सेव हो गया. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क रोलबैक वर्क? रोलबैक का मतलब है all changes recorded in this are permanently of the transaction are permanently discarded. Discarded. Now they are permanently gone. They are not stored anywhere. वो temporary table भी चला गया. And now that's over. Now that's over. ये एक बात याद रखना, मोमेंट आपने कमिट कर दिया या मोमेंट आपने रोल बैक कर दिया, इन आइदर केस योर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड. जो टेम्पररी टेबल बना था वो टेम्पररी टेबल रिलीज हो जाता है. दैट टेम्पररी टेबल गॉन, इट इज नो मोर देयर. ऑब्वियसली उसके बाद में आप लोग जो भी क्वेरी करते हो, यू नीड टू नोट दैट एनी डीएमएल ऑपरेशन, any DML operation performed after after completion completion of transaction. ए कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? या तो कमिट या तो रोल बैक, वॉट एवर इट इज. कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी will be again auto committed, again auto committed. आई गेस जिन जिन लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, दे गॉट द आंसर टू योर क्वेश्चन. सर मैंने एक बार कमिट कर दिया, अब सर मैं कमिट के बाद में रोल बैक कर सकता हूँ क्या? नाउ यू कैन नॉट, क्योंकि जो कमिट हो गया वो कमिट हो चुका है. दैट इज सेव्ड इन द डेटाबेस और योर करंट ट्रांजैक्शन इज गॉन. अब इसके आगे आप लोग चाहे जो भी करो, दैट विल गेट ऑटोमेटिकली कमिटेड अनलेस एंड अनटिल यू हैव स्टार्टेड अ न्यू ट्रांजैक्शन. तो अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर मेरा कमिट हो गया, अब मेरे को वापस से कुछ तो चेंजेस करने हैं, फिर से नया ट्रांजैक्शन चालू करो और फिर नया वाला ऑपरेशन करो. करेक्ट. लेकिन अगर आपने नया ट्रांजैक्शन चालू करना आप लोग भूल गए, टेक इट ग्रांटेड, टेक इट ग्रांटेड. अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी ऑटो कमिटेड. प्लीज रिमेंबर दैट. कुछ लोग कह रहे हैं सर मैंने एक बार रोल बैक किया, मैंने दूसरी बार फिर से रोल बैक किया, अब क्या होगा? कोई बड़ा तीर आप लोग नहीं मार रहे हो. आपने एक बार रोल बैक कर दिया तो जो जो चेंजेस आपने पहले सेव किए थे वो ऑलरेडी डिस्कार्ड हो गए, वो डिस्कार्ड हो गए. आपका जो अगला रोल बैक है उसका कोई मतलब नहीं है. अब ऐसे मत कहना तो फिर मेरे पिछले ट्रांजेक्शन के पिछले ट्रांजेक्शन में चला जाएगा क्या? दैट इज शेयर नॉनसेंस. ऐसा कुछ नहीं होता है. आपने एक बार रोल बैक कर दिया, आपने एक बार रोल बैक कर दिया, जो भी करंट ट्रांजैक्शन चल रहा था, करंट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है. अगर करंट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में वापस से आपने रोल बैक किया, उसका कोई मतलब नहीं है. आई होप सो. जो मुझको दो चार क्वेश्चन बीच बीच में लोगों ने पूछे थे, सर मैंने कमिट के बाद में रोल बैक किया तो क्या होगा, रोल बैक के बाद में वापस से रोल बैक किया तो क्या होगा, रोल बैक के बाद में मैंने वापस से कमिट किया तो क्या होगा, उसका कोई भी मतलब नहीं है. व्हाट वाज इंपॉर्टेंट? अगर आपको मल्टीपल कमिट या रोल बैक करने हैं तो कॉमन सेंस आपको मल्टीपल ट्रांजैक्शन करने चाहिए. पहला ट्रांजैक्शन शुरू करो, ऑपरेशंस करो, उसको कमिट या रोल बैक करो. एक बार वो हो गया, स्टार्ट विद द न्यू ट्रांजैक्शन, वापस से उसके ऊपर ऑपरेशन करो, फिर काम करो और उसके बाद में आगे करो. अमित, unless and until you finish with one transaction you cannot start with the second transaction at the beginner level. I hope you got the answer. जब तक एक ट्रांजैक्शन खत्म नहीं होता तब तक अगले ट्रांजैक्शन का क्या करना है आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. एज यू आर स्टार्टेड विद वन ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन शुरू किया है उसके लिए कमिट या रोलबैक जो कुछ भी करना है वो पहले खत्म करो और उसके बाद में अगला ट्रांजैक्शन चालू करो. सर मैंने दो बार स्टार्ट ट्रांजैक्शन किया, डोंट डू दिस. दैट डजंट मेक एनी सेंस. एटलीस्ट एट द बिगिनर लेवल दैट डजंट मेक एनी सेंस. राइट. हिमांशु का क्वेश्चन है, अगर दोनों क्लाइंट ने एक साथ स्टार्ट ट्रांजैक्शन किया तो देर इज नो प्रॉब्लम.
अगर दोनों क्लाइंट ने एक साथ स्टार्ट ट्रांजैक्शन किया, स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम. दैट इज व्हाट आई मीन बाय द आइसोलेशन. आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, मल्टीपल क्लाइंट एट द सेम टाइम कर सकते हैं. दैट इज व्हाट यू मीन बाय द आइसोलेशन. अब ये दोनों ट्रांजैक्शंस अपने अपने जगह पे, अपने अपने लेवल पे अच्छे से वर्क हो जाएंगे. आप उसकी चिंता मत करो, आप उसकी चिंता मत करो. राइट? यस, सिंगल सिंगल स्टेप्स. और कुछ क्वेश्चन है बीच में? Can we commit 2-3 times in a single transaction? No, you cannot commit 2-3 times within a single transaction. Moment में अरे मैं क्या कह रहा हूँ? I made it very clear. Moment you use commit, moment you use rollback, your transaction is over. So how you can commit or roll back within a single transaction twice or thrice? आपने पहली बार commit या roll back कर दिया, then it is over. A game over. अब उसके बाद में क्या करोगे? कोई मतलब नहीं है. I hope so on it is clear. We can't roll back in steps. No, we can't roll back in steps. Is it right? To be frank, not today. कल मैं आपको, कल मतलब अगले लेक्चर में मैं आपको और एक इसका एडवांस कांसेप्ट बताऊंगा. देयर इज समथिंग कांसेप्ट कॉल्ड एज सेव पॉइंट. देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज सेव पॉइंट. तब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रोल बैक इन स्टेप्स. दैट कांसेप्ट इज देयर, बट आज के लिए नहीं है. अगला क्वेश्चन. कमिट करने के बाद अगर चेंज, अरे रुको पढ़ने तो दो. कहां पर गया क्वेश्चन? कमिट करने के बाद अगर चेंज करना पड़ा तो कुछ नहीं कर सकते क्या? कमिट करने के बाद में अगर चेंज करना पड़ा तो फिर से एक बार अपडेट क्वेरी कर सकते हो. आई होप अक्षय दैट यू रिमेंबर. अक्षय नहीं, किसने पूछा? शुभम. आई गेस यू कैन वापस से कमिट क्वेरी उल्टा, वापस से अपडेट क्वेरी चेंज करो और फिर से एक बार बैलेंस वापस से बढ़ा दो. दैट इज व्हाट यू कैन ऑलवेज डू. नो वन इज स्टॉपिंग यू. और ऊपर कुछ क्वेश्चन है. हम लोग इतने क्वेश्चंस लेंगे और बाद में हम लोग रुकने वाले हैं वैसे भी. और जितने रिलेवेंट क्वेश्चंस है उतने ही अभी पूछना. अगर आपको लग रहा है आपके क्वेश्चंस बहुत एडवांस है तो प्लीज वेट आफ्टर द लेक्चर और फिर हम लोग वहां पर लेंगे. हाँ, राजेंद्र का कुछ क्वेश्चन है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग फॉर रॉन्ग ट्रांजैक्शन इन बैंक, बैंक मैनेजर फायर्स रोलबैक क्वेरी फ्रॉम हिज यूआई. नॉट रियली, नॉट रियली. जिसका ट्रांजैक्शन चल रहा है वही उसको रोल बैक कर सकता है. जो ट्रांजैक्शन किसी और का चल रहा है, आप किसी और के ट्रांजैक्शन को रोल बैक नहीं कर सकते हो. बैंकिंग में एक्चुअली क्या होता है, वहां पर बहुत सारी एडिशनल चीजें हैं. उसके बारे में आप अभी ना सोचो तो अच्छा है. पहले कुछ बेसिक समझो, बेसिक कंफर्टेबल कर लो और उसके बाद में एक्चुअल जब बैंकिंग प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे, देयर आर लॉट मेनी न्यू थिंग्स टू बी डिस्कस. और कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है क्या? लेट मी जस्ट चेक अप दैट. What is next? What if both client transaction commit at the same time? Yes, they can. Shivam का कुछ question है. I will take up this question. Even though, listen carefully, even though multiple clients can start transactions simultaneously. Can they start transactions simultaneously? Answer is yes. They can start transactions simultaneously. क्या multiple clients at क्या थे simultaneously multiple operations कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं. इसी को तो isolation कह सकते हैं. सर अगर मल्टीपल क्लाइंट एक साथ कमिट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं. लेकिन रिमेंबर रूल. शिवम के क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं, इट इज इंपॉर्टेंट. इवन दो इवन दो मल्टीपल लोग एक साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इवन दो मल्टीपल लोग एक साथ कमिट कर रहे हैं, इवन दो मल्टीपल लोग एक साथ रोल बैक कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, आपके डेटाबेस के साइड पे, आपके आरडीबीएमएस सर्वर के अंदर एक क्यू क्रिएट होता है. क्यू, क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्यू. जो क्यू, इसको हम लोग कहते हैं रिक्वेस्ट क्यू. आई रिपीट वंस अगेन. आरडीबीएमएस के अंदर सर्वर के साइड पे एक क्यू क्रिएट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिक्वेस्ट क्यू. इवन दो मल्टीपल पीपल आर डूइंग कमिट ऑपरेशन एट द सेम टाइम, वो डायरेक्टली दोनों कमिट एक साथ नहीं होते. ऑल द ऑपरेशंस which are given to the database, they are first dumped into the queue, they are first dumped into the queue and then they are retrieved one by one and they are taken care. So obviously अगर मल्टीपल लोग एक साथ स्टार्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या मल्टीपल लोग अगर एक साथ कमिट कर रहे हैं, तो इवन दो दोनों ने एक साथ किया है, सर्वर की तरफ दे विल बी एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली वन आफ्टर अनदर. सर किसका पहले होगा? जिस किसी का भी पहला सर्वर की तरफ पहुंचेगा वो पहला रन होगा, जिसने जिसका सेकंड बाद में पहुंचेगा सर्वर की तरफ वो बाद में रन होगा. इवन दो दोनों एक साथ भी पहुंच गए फिर भी क्यू के अंदर जो भी पहला जाएगा, क्यू के अंदर जो भी पहला जाएगा वो पहले रन होगा, जो बाद में जाएगा वो बाद में रन होगा. दिस इज वेरी क्लीन एंड क्लियर.
दिस इज हाउ आरडीबीएमएस हैंडल, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, दिस हाउ आरडीबीएमएस वर्क्स. Difference between commit and rollback in interview type based. Difference between commit, Shivam, I guess it is clear, the whatever that you ask. Difference between commit and rollback, there is nothing much that interview type of, ये देने के लिए मुझको पहले टॉपिक पूरा पढ़ाना पड़ेगा. आई रिपीट वंस अगेन, मुझको टॉपिक पूरा पढ़ाना पड़ेगा. मेरा कमिट और रोलबैक का टॉपिक पूरा नहीं हुआ है. तो सौरभ, अभी जितना बताया उतना आधा सुन लो, उसके बाद में जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू पूरा आंसर दिया जा सकता है. कल मेरे को वापस से याद दिलाना. आज जितना आपको समझ में आ गया, जितना मैंने कमिट के बारे में आपको बताया, उतना काफी है. दिस इज डन, दिस इज डन, दिस मच नॉलेज इज सफिशिएंट. उसके आगे अभी के लिए मत पूछना, मंडे को पूरा होने दो. आई गेस यू विल बी एबल टू आंसर इट. कैन वी टेम्पररी सेव? नो, यू कैनॉट टेम्पररी सेव. टेम्पररी सेव ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, एटलीस्ट इन डेटाबेसेस. तो वो जो कमिट इज लाइक परमानेंट कमिट ओनली, राइट? आई बिलीव इट्स 7 o'clock, बहुत टाइम हो गया. आप लोगों को ट्रांजैक्शन कुछ ज्यादा ही पसंद आया लगता है. सो दिस इज अ गुड टाइम, वी शुड स्टॉप ओवर हेयर. गिव मी सम टाइम, probably I can try to put some new assignments, and those assignments will be like more onto the group buy. I want you people, listen carefully, to take this assignment seriously, prepare them seriously. If any problems are there, definitely your lab faculties are there to help you out. I'm there to help you out. We will try to make ourselves bit more comfortable. And then ट्रांजैक्शन का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन इज हाफ वे. हमको अभी सेव पॉइंट का टॉपिक देखना है, ये देखना है. और जो कुछ लोगों को क्वेश्चन होंगे, सर अगर एक ही रिकॉर्ड अगर मल्टीपल लोगों ने एक साथ मॉडिफाई किया तो क्या, व्हाट इज टेबल लॉकिंग, व्हाट इज रो लॉकिंग. नाउ दिस काइंड ऑफ सम कांसेप्ट्स आर देयर, दैट आल्सो वी विल लर्न सेपरेटली ऑन टू द मंडे सेशन. तो वो हम लोग देखेंगे. और उसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर जाएंगे. लिसन केयरफुली, मंडेज लेक्चर इज इंपॉर्टेंट. ये लॉकिंग वगैरह छोड़ दो, ट्रांजैक्शन इज मोर ऑफ थियोरेटिकल वन, तो आप लोग सुन लेना एक बार. बट मंडे आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विथ जॉइंस. आई रिपीट वंस अगेन, मंडे आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विथ जॉइंस. सो यू प्लीज इंश्योर दैट जितना अभी तक आपने पढ़ा हुआ है उसको पहले थोड़ा सा कंफर्टेबल करके आ जाओ, राइट? वी कैन सेट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ क्लाइंट्स. Shubham, that is database administration question, and we'll change from database to database. एक बार कमिट करने के बाद रोल बैक नहीं होगा ना? नहीं होगा, इमीडिएटली नहीं होगा. आप लोग नया ट्रांजैक्शन चालू कर सकते हो. व्हेन वी हैव टू कंप्लीट टुडेज असाइनमेंट बाय मंडे इवनिंग, आराम से, बहुत टाइम है अभी. करेक्ट. असाइनमेंट में लेट नाइट पोस्ट करूंगा, मुझको असाइनमेंट पोस्ट करने के लिए टाइम लगने वाला है. देयर इज नो क्लास टुमारो आई गेस देयर इज सम डिफरेंट शेड्यूल. आई गेस यू पीपल आर शेड्यूल्ड फॉर एप्टीट्यूड. Suppose we start transaction, then we updated data 2-3 times. स्टार्ट ट्रांजैक्शन करने के बाद में जितने डीएमएल क्वेरीज आपने दिए वो सारे के सारे एक साथ रोल बैक हो जाते हैं. वर्षा, स्टार्ट ट्रांजैक्शन करने के बाद में जितने सारे डीएमएल क्वेरी आप लोगों ने दिए उतने सारे एक साथ रोल बैक हो जाते हैं, राइट? सो पीपल हु हैव फिनिश, लेट अस स्टॉप ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. See you on Monday. People who have got questions, they can wait. Others, they can leave. Bye bye.